Mr. Kala Rana's house, and the NIA is interrogating, his parents. What are the, other developments that you can tell us in terms of this, as well as other aspects of this ongoing story? Rana is a gang member of the Lawrence Bishnoi gang, and in fact his parents are being questioned by the NIA to verify his connections, just because these gangsters have abandoned and left their families since they have indulged into these kinds of crimes. But still the family is very much aware that what kind of people they are connected with and with whom. So that is the reason Kala Rana's family is being questioned by the NIA to verify the connections of Kala Rana. Either he was connected to the local gangs, or he was connected to the cross-border links. He was indulged into the weapon smuggling, even if he was indulged into drug smuggling, and even if he is connected to some pro-Khalistani elements. These all kind of questions are being verified from the Kala Rana gang. This is what I'm trying to tell you. These are the gangsters. Earlier, they were small gangsters just because they don't have money to execute their plans. But now, the people who are actually sitting in Pakistan and in the different countries, and even having a huge support, financial support, they are just injecting the money and exploiting these people to carry out their own activities in Punjab at the different locations in country as well. They are making the easy access of the weapons, they are making the easy access of their shelter, they are trying to help them to flee from India to different countries, and even there also, even in Dubai, in Canada, in any country, they are all right, Amandeep, stay with us. We have some more breaking news coming in. We will continue to track the story, but moving on, the TMC MP Abhishek Banerjee's sister-in-law, Maneka Gambhir, was on Saturday evening stopped by the ED at the Kolkata airport from flying abroad and was handed over summons to join the investigation in a money laundering case. Now, ED is set to quiz Maneka Gambhir today, is the latest that we're understanding so far. Now, Abhishek Banerjee's sister-in-law was stopped by the immigration authorities at the Kolkata airport while catching a flight to Bangkok, is what we understand, who then informed the ED she was handed over summons to join the investigation in the alleged money laundering case. There was also a lookout circular issued against Gambhir by the Federal Probe Agency, which is why she was stopped, is what we learned. This is the third time that the ED has summoned Maneka Gambhir in the case. Now, it is also said that she earlier challenged the ED summon in the Calcutta High Court. It was allowed to appear at the ED's office, but of course the latest being that she was Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee's sister-in-law Maneka Gambhir was stopped at the Kolkata airport and denied permission to travel abroad, as the Enforcement Directorate served a notice to appear before the agency. For more information on this, we're joined in by Shavan. Shavan, the latest that we understand, of course, she was summoned and also stopped at the airport, but what are the other details that we're gathering so far? Well, Nivedana, this is a response to an attempt that was made by Abhishek Banerjee's sister-in-law to leave the country. In fact, she was stopped at the Kolkata airport. This was on Saturday late night, is what we are being told. Immediately thereafter, the Enforcement Directorate had served her a summons at the airport itself, asking her to appear before the Kolkata office on Monday. She's essentially been asked to appear today, is what we know as of now. What's important to point out here is that she has been under the scanner, along with Abhishek Banerjee, as well as Abhishek Banerjee's wife, Ruchira Banerjee, and it is essentially connected to one particular company which goes by the name of Leaps and Bounds. And in fact, at this very company, the Enforcement Directorate suspects had received money from a businessman, which they believe that this was a part of the proceeds of crime. And secondly, they also suspect that perhaps the businessman was actually providing money to this particular company as protection money, especially for the cattle, for the coal and cattle smuggling. Now, what's important to point out here is that the links of this very company with Abhishek Banerjee is still being probed by the Enforcement Directorate. Abhishek Banerjee all this while has been maintaining that there is no link whatsoever, and whatever he has had any association with this particular company has already been informed to the Enforcement Directorate. Shavan, we also understand that this is the third time that she has been summoned in this case.
All right. This is, of course, the latest coming in terms of Abhishek Banerjee's sister-in-law, Menika Gambhir, reported to have been stopped at the Kolkata airport. Now, she was denied permission to travel abroad as the Enforcement Directorate served her a notice to appear before the agency in connection with the money laundering case, is what we understand so far. Now, on the other hand, of course, she was trying to catch a flight to Bangkok on Saturday night, and then she was handed over the summons to join the investigation. Now, we also understand that there was a lookout circular issued against her by the Federal Probe Agency, which is why she was stopped. This is the third time the ED has summoned Menika Gambhir in the case. In fact, what we're also gathering is that she had earlier challenged the ED to summon in Calcutta High Court and was allowed to appear at the ED's office at the central government office at Salt Lake in the northern outskirts of Kolkata instead of appearing in New Delhi. We're slipping into a short break, but on the other side, all eyes on Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver the order today. Top court to hear over 200 PILs challenging CAA today. All of this and much more on the other side. Stay tuned. Wrongdoings have been alleged, and also it has been alleged that as to how the Transport Minister of Delhi was made the head of the particular committee which was supposed to do procurement as well as tendering of procuring 1,000 low-floor buses. After going through all the details, Lieutenant Governor recommended and also approved for the CBI probe. अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। मकसद ये था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। सोच का मंथन, विचारों का समागम, इतिहास लिखेंगे हम। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन। मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। Is being alleged in the complaint in procurement of 1,000 buses, low-base buses to be used by the DTC. Inquiry will be also be initiated by the CBI after it accepts the case. CBI will question the minister in concern, that is the Minister for Transport over here. It's time for the third edition of the prestigious Ram Jethmalani Memorial Lecture. The biggest names on the most esteemed forum. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Around 6:30 p.m. she reached the airport and she was going to take a flight to Bangkok around 9:45, but she was stopped by the immigration officials, and then ED official came and gave her a notice to appear before the ED next week, probably on Monday. That in spite of a travel restriction, travel ban, she tried to move from India to Bangkok, and ED is trying to understand whether that's one of the reasons of her being involved in the case, whether she was trying to elope or she had some other work. For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil. सोच का मंथन, विचारों का समागम, इतिहास लिखेंगे हम। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन। As political turf heats up in Jammu and Kashmir,
BJP and PDP call core group meetings today. Now, the PDP core group to meet today at around 12 p.m. Agenda to strengthen party in Pir Panjal and Chenab Valley, where Azad is expected to make an impact. BJP core group meeting at 4 p.m. today, where preparations for upcoming visit of Home Minister Amit Shah and strengthening party in Muslim majority areas will be discussed. Now, Seh Prabhari Ashish Sood, along with BJP Jammu and Kashmir President Ravindra Raina, will chair the meeting. This is the latest that we have on this. For more information, we're cutting across to Gursimran, who's joining us from Jammu. Gursimran, this is of course the latest that we're gathering in terms of the core group meetings that will be taking place today. But what else are we? What else is on the agenda of this particular meeting? See, this week is going to be politically really hot for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Starting off on Monday, both the political parties, that is the People Democratic Party and the BJP, they have called their core group meetings. Mehbooba, being in Jammu, will be meeting the core group leaders today at around 12 noon, wherein she will be discussing the agenda. Especially the focus will be on the Pir Panjal and the Chenab Valley range, which is a stronghold of the PDP, considering the fact that this is a Muslim majority area. But Azad coming into the frame, now the political parties, the traditional political parties, PDP and NC, are fearing that they will lose their vote share from that very place, and that's why this meeting is really very crucial for the People's Democratic Party. While on the other hand, the Bharatiya Janata Party too have called their meeting of the core group members. The meeting is scheduled at 4 in the evening, wherein Ashish Sood, who happens to be Seh Prabhari of Jammu and Kashmir, along with the BJP J&K chief Ravindra Raina, will be chairing the meeting, and the agenda of the discussion will be the upcoming visit of Home Minister Amit Shah, which is expected starting of the October, and also the agenda will be to strengthen the party in the Muslim majority areas as the Union Territory of Jammu and Kashmir gear ups for the upcoming assembly elections. For more, stay tuned to Republic TV right after this short break. So this year's third edition of the Ram Jetmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? The hijab issue, the nikah halala issue, the triple talaq issue, they've all suddenly landed up at the Supreme Court as with constitutional challenges. Had there been a UCC, perhaps these issues would have been ironed out. The speakers are both distinguished, very learned, they're well known, and this edition of the memorial lecture would make for extremely compelling viewing. Watch the unmissable Ram Jetmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Wrongdoings have been alleged, and also it has been alleged that as to how the Transport Minister of Delhi was made the head of the particular committee which was supposed to do procurement as well as tendering of procuring 1,000 low-floor buses. After going through all the details, Lieutenant Governor recommended and also approved for the CBI probe. अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। मकसद ये था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। सोच का मंथन, विचारों का समागम, इतिहास लिखेंगे हम। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन। मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। Being alleged in the complaint in procurement of 1,000 buses, low base buses to be used by the DTC. Inquiry will also be initiated by the CBI.
Rahul Gandhi has started his Yatra all the way from Kanyakumari, has now reached Thiruvananthapuram, and these are the visuals that are coming in from his rally, Bharat Jodo rally, which is taking place outside near Pattam in Thiruvananthapuram. Stay tuned to all the latest updates about Rahul Gandhi's Bharat Jodo rally as we are following and tracking all the latest information. Stay tuned. Rahul Gandhi's rally is right now taking place near Pattam in Thiruvananthapuram. In Thiruvananthapuram, as you can see in these visuals, Rahul Gandhi is walking on the road. He had started his journey early at 7 a.m., about 8 kilometers away from where the spot is right now. In a short while from now, at around 10:30, 11, he will be addressing a rally at a nearby school, at St. Mary's School, where he will also be speaking. As you can see around, there is a cavalcade of people. There are about 20 vehicles which are all proceeding before his Padayatra that you can see. Along with Rahul Gandhi, you could also see some of the key Congress members, including ASSC Secretary, ASSC National Secretary, as well as the MP from Thiruvananthapuram and MP from Vadakara, and several other key Congress workers are also here. And the rally will end at Karakutam at around 5 p.m. today, after which he will be resting at the suburbs in Karakutam and then continue. Now, the interesting part about this rally is that the rally is taking about 20 days in Kerala, a place where there is a very strong Congress stronghold, and in this stronghold itself, the rally is taking place for 20 days, so which essentially means Rahul Gandhi is going through one of the strongest bastion of the Congress and spending 20 days over here. And whereas we also get to hear in places like Uttar Pradesh, he's going to spend only 2 days. But behind me, you can see these visuals. Rahul Gandhi is addressing he's waving at the crowd also. There's a police which has put these distance so the media also cannot go. There's a huge security corridor which has been built for him to enable this rally. A lot of resources have been pulled in to ensure the safety of Rahul Gandhi as well. So the rally in a short while from now will be taken to St. Mary's School in a short while, where he is likely to address a large crowd. But at the moment, you can see about 200 to 300 congressmen are walking along with him at the Padayatra. The Padayatra which began at 7 a.m. today is going to end at around 5 p.m. today in Thiruvananthapuram, and then from there he will proceed further to different parts of Kerala. So these are the visuals that are coming in from Thiruvananthapuram. Rahul Gandhi as part of his rally, and in a short while from him we'll give you all the latest updates. Stay tuned to Republic TV. We'll be back after a break. It's time for the third edition of the prestigious Ram Jethmalani Memorial Lecture. The biggest names on the most esteemed forum. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. Around 6:30 p.m. she reached the airport and she was going to take a flight to Bangkok around 9:45, but she was stopped by the immigration officials, and then ED official came and gave her a notice to appear before the ED next week, probably on Monday. That in spite of a travel ban, she tried to move from India to Bangkok, and ED is trying to understand whether that's one of the reasons of her being involved in the case, whether she was trying to elope or she had some other work. So this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? The hijab issue, the nikah halala issue, the triple talaq issue, they've all suddenly landed up in the Supreme Court as with constitutional challenges. Had there been a UCC, perhaps these issues would have been ironed out. The speakers are both distinguished, very learned, they're well known, and this edition of the memorial lecture would make for extremely
compelling viewing. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Wrongdoings have been alleged, and also it has been alleged that as to how the Transport Minister of Delhi was made the head of the particular committee which was supposed to do procurement as well as tendering of procuring 1,000 low-floor buses. After going through all the details, Lieutenant Governor recommended and also approved for the CBI probe. अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। मकसद ये था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। सोच का मंथन, विचारों का समागम, इतिहास लिखेंगे हम। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन। मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल। For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? The hijab issue, the nikah halala issue, the triple talaq issue, they've all suddenly landed up in the Supreme Court as with constitutional challenges. Had there been a UCC, perhaps these issues would have been ironed out. The speakers are both distinguished, very learned, they're well known, and this edition of the memorial lecture would make for extremely compelling viewing. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Mega NIA crackdown on terror. Gangsters and links with terror are under the link. Pan-India NIA raids underway across 50 locations. Trouble mounts for Abhishek Banerjee's kin after being stopped at the airport. The ED is set to grill Menaka Gambhir. All eyes on the Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver its order today. Prime Minister Modi is to inaugurate the dairy summit. Over 50 countries will be participating. Good morning and welcome. You are watching Republic TV. This is live and breaking. I'm Nupur Talwar Suri. Straight on to the big story we're tracking. A major verdict is expected to be pronounced today by the district court in Varanasi in connection with the hearing of the Gyanvapi case, leading to extensive police deployment through the city, along with inspections that are being carried out at various locations. Here's what we are expecting. The Varanasi District Court is all set to rule on the maintainability of the petitions seeking daily worship at the Shringar Gauri temple. कल जो 7 रूल 11 पे ये दावा पोषणीय है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे माननीय जिला जज महोदय सुनवाई जो 2 महीने लगातार किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रायोरिटी पे इसको सुन लीजिए। वो सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल इसका फैसला आना है। इस फैसले में ये तय होगा कि ये जो है मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। This order in the Gyanvapi case was reserved on the 24th of August. The verdict will not be the final decision in the case. कल का फैसला जो भी आएगा, चाहे जिसके पक्ष में आवे, वो आखिर तो है नहीं, पहला है। इसके बाद जो पार्टी दुखी होगी वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश जो दुखी होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये मामला रजिस्ट होना है सुप्रीम कोर्ट में। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमारा कहना ये है कि यहाँ जगह जगह हिंदू देवी देवता के स्थान है। Many supporting the petitioners believe the evidence is piling up. The verdict comes at a time when some are alleging that threats are being issued over the case.
बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि मैं और मेरे पिताजी इस केस को लड़ें और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। और जो भी बातें हैं हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म की हैं, सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन के और सरकार के नॉलेज में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग शरारती तत्व भी हैं, असामाजिक तत्व भी हैं, एंटी नेशनल तत्व भी हैं, वो अपना संयम रखेंगे। Security in the region has been tightened ahead of the verdict, with the commissioner imposing Section 144. आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें SHOs, ACPs, एडिशनल DCPs और DCPs सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 CRPC के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। The case had previously created ripples in the political circles. I hope that the UP government will book a case against him for creating divisions, for creating mistrust among both the communities, and arrest this person. How can this report be leaked to media? This is a deliberate leak which has been done by the person who was appointed on the suggestion of the petitioners. Now, the countdown to the key Gyanvapi verdict has commenced. Bureau Report, Republic TV. Now, Republic TV has exposed terrorist activities of Dawood Ibrahim's gang and his goons in the real estate sector in the financial capital of Mumbai. The Maharashtra Deputy Chief Minister is ordered to probe the Bhindi Bazaar redevelopment project. The BMC has also issued a stop work notice to Saifi Burhani Upliftment Trust. Now, the BMC will probe the project of the MVA back in 2019 and has given its nod to the project. Under which irregularities have now been found. What you are given to understand is that the project will now be probed as per instructions that have been given by the Home Minister Devendra Fadnavis. A Republic has accessed a complaint letter given to the BMC chief by the advocate Ajay Agarwal requesting the BMC to continue the stop work notice till this project complies with all laws, rules and regulations and all other court's directions, including the Supreme Court's order. Alicia is reporting on this. She now joins us on the phone line. Alicia, give us more details as to what's happening in this case. Of course, we are given to understand that the Maharashtra Deputy Chief Minister has ordered a detailed probe. All right, we seem to have lost that audio connection with Alicia. We're going to try and get her back in just a bit. But here's what we know so far. Republic TV has exposed terrorist activities of Dawood Ibrahim's gang and his goons in the real estate sector. Alicia, I think, is back with us. Alicia, give us more details of what we're looking at. We can see that it's a Salim Qureshi who is now under the arrest, who was arrested by NIA. Clearly shows the involvement of him in the Bhindi Bazaar redevelopment project. There are some of the documents that we have access and also the video of Salim Qureshi clearly showing that he is in the same site of the Bhindi Bazaar redevelopment project, which is now under the radar of BMC and the Maharashtra government itself. Because this is the same project as what we have been told in 2019, which was given a nod for the further constructions, because it's something from the SBUT, that is Saifi Burhani Upliftment Trust, was given the contract of some of the lane, and the first phase something was completed and the second phase has put up on halt. But moreover, that was Uddhav Thackeray, who was the Chief Minister of Maharashtra, has given a nod, and also there is a picture of Uddhav Thackeray from the SBUT giving an appreciation. Now, what has come into a light at this point of time, because it's Devendra Fadnavis, when it's an assembly, had clearly mentioned that there are some of the illegal construction that has been done in the same area over the Bhindi Bazaar redevelopment, that is a cluster redevelopment project, and that is something has to be stopped, and the inquiry, the probe, that has to be conducted by the Brihan Mumbai Municipal Corporation, and same direction has been given to the BMC Commissioner as well, where the BMC has already given a stop work notice to SBU
SBUT, who was developing the same cluster redevelopment project. But what has been mentioned by Devendra Fadnavis as well, that there are some of the illegal construction that has been done, and importantly there are some of the role that need to be under the scanner. So now what the BMC is going to see, what are the area of the same space, moreover what are the involvement of the MVA as well, because there are picture that has emerges, and we saw that in 2019 when Mahavikas Aghadi was in government, has given a permission for the same project which has turned out to be illegal, and how the control of the Dawood, the company gang, is clearly can be seen, because where we know that Salim Qureshi alias Salim Fruto, who is being arrested by National Investigation Agency in connection with Dawood Ibrahim companies, the extortion case which has been registered with NIA. But now his video has also surfaced. Please stay with us, Alisha. I'm going to come back to you. Let's also bring in Mr. Agarwal. He's a Supreme Court advocate and the complainant in this case. Mr. Agarwal, thank you for speaking to us on Republic TV. Now, we are given to understand that obviously, even as the probe is on in various illegalities, there are also allegations that the original land use plans were actually changed. Yes. Entire plans which were approved earlier by the BMC have been totally changed. They have closed the broad roads which are thoroughfare for the Bhindi Bazar area. There is a mutton street also, to whom a lot of people used to pass through. And the major thing is that in case of any exigency, emergency, eruption of fire, the fire tenders or fire engines cannot move inside, because they are constructing buildings to the 70, 80 to 100-story buildings they are constructing. In overall, 14 buildings are to be constructed in that area. So there is no place for the fire engines to move. So they are daring this thing because of the connection of the underworld. In fact, I tell you, this SBUT project, which is Saifi Burhani Upliftment Trust project, is a Benami project of Dawood. And this input is there with the agencies also. This input is already there with the agencies also. And Mr. Salim Fruit, who is co-brother of Chota Shakil, he is Salu of Chota Shakil, he is getting the entire area vacated through his force. And he is shown to be seen on a video, which I have given to you, that we have done dadagiri to get it vacated, and some money has remained over there. So a lot of thousands of crore has been pumped in this project. They have not taken any booking from anywhere. Now today NIA is all over India. NIA is conducting searches, raids, etc. NIA should also conduct a raid on the office of the SBUT, and it will come to know from where the funds are coming. Right, so what you are asking for essentially is also a probe of the NIA into this, because you allege that the funding of this is suspect, and that the D gang is behind this? Definitely, 101%. That D gang is fully behind it, because it is a bastion of Dawood Ibrahim. It is the birthplace of Dawood Ibrahim. There is a property in the name of Dawood Ibrahim. There is a property in the name of Dawood's wife, Mehzabeen. There is a property in the Dawood's brothers, Anis. Some properties have been auctioned. And in Benami Roop se that SBUT has already taken over that property. That is, people used to call that only that Dawood Ibrahim has taken over through SBUT. And SBUT is daring to do all such illegal activities because of the shelter given by underworld. They are taking work from BMC illegally. Earlier, some illegal NOC has been issued. When the things come into the light, that NOC was withdrawn. Right. Again, the stop work was issued on 27th of August. Before I wrote a letter on 10th of August, a very detailed letter, and on 21st of August, narrowing all the anomalies. They are also defying the Supreme Court order. The fate of these towers will be like that of Supertech Twin Towers,
because there are so much illegalities. These towers are bound to be demolished later on, and it will be a national loss of the government of India, national property, to the tune of around 25,000 crore, if not rectified now. All right, Mr. I have written letter to the police commissioner, to the chief minister. They have referred my letter to the concerned authorities also. I have referred the BMC commissioner also. He has also referred my letter to the concerned authority. My submission is that the thorough probe must take on thorough probe on every aspect, on the terrorist angle, as well as on the legality angle. Then only project should be given a go through. Otherwise, project should be abolished or stopped till that time. All right, Mr. Agarwal, the complainant of the case, joining us. Thank you for speaking to us on Republic TV. As Mr. Agarwal is pointing out, he believes that there are several illegalities which have now been brought to the fore. Also saying that the issue of funding needs to be looked into. Alicia, if I could come back to you now. Alicia, what we are saying also is, calls for action against the previous MVA government, because the Deputy Chief Minister has already stated that he believes that corruption was involved in this particular project. Can you give us more details? Well, Nupur, if you remember, we know that since the time the new government led by Eknath Shinde and Devendra Fadnavis has come, they were actually reviewing over the sanction that has been given by the previous government, that is Mahavikas Aghadi. So one of this project that comes under SBUT, that is Saifi Burani Upliftment Trust, and the cluster redevelopment project was something under the radar and also under the scanner. Is importantly what mentioned by Devendra Fadnavis in the assembly as well, that there are some of the plans or the changes in the redevelopment that has need to be looked into by the municipal corporation. Moreover, the width of the road has also been reduced and some of the benefits that has been given to the developer. So that is when the instructions that has been given to the BMC, the commissioner has been asked to look into the probe, because now the claim that is not only comes over the illegality and irregularities of SBUT over the project, but also the involvement of D-gang into the same project. We can see Salim Fruit, who has already been arrested in connection with Dawood Ibrahim. Now we can see that he was in the same project in SBUT, where he was clearly giving a threat to the people as well, clearly mentioning that there are spaces that has been occupied by them, and he was clearly seen to be threatening to the officials as well. So this is something, an involvement where now it has come to a light that at a certain point, when Maharashtra government has already asked to look into the probe, has asked the BMC to check into the matter, where there will be a detailed report that is soon going to be submitted to Maharashtra government, because it's not only the illegality which has been done by SBUT, but also the role of Mahavikas Aghadi is also under the scanner. All right, Alicia, of course, is continuing to bring us the latest on this. Now, Alicia, the other thing that I wanted to ask you is that we were just speaking to the petitioner there, and he says that the original plans have been changed. I'm going to come back to you in just a bit, but let's play out that video clip that we have managed to access. खान को बुलाओ, इनको बुलाओ और क्लियर करो। जब तक पैसे क्लियर नहीं होगा बोलना, उसको उठना नहीं बोलना मीटिंग से। मेरे क्यों बिल्डिंग दी, क्या दी, तुमको अभी मालूम ही नहीं कुछ। जब यहाँ पे ना 100 गाड़ियाँ, सुनो असद भाई, जब 100 गाड़ियाँ लगती थी ना यहाँ पे गाड़ियाँ, किसी गाड़ी नहीं घुसती, मैं और असलम भाई खाली काम करते थे। जो भी है वो काम नहीं है अभी, तो नहीं मैदान मिला ना तो सब कुछ है। अगर वो बोलेगा तुमको फ्री उनका मैटर उसका इतना में बोल रहे हैं, माल के लिए नहीं बोलेगा, तो उनका जो आउटस्टैंडिंग है ना, तो अभी आसिफ भाई का बोल रहे हैं कि आप और ये सलीम भाई, हम लोग चारों जन बैठ के जो भी है सॉर्ट आउट करें। वो नहीं, फोन नहीं उठा रहा है ना इधर। हाँ, तो एक काम करूँ क्या, मैं फ़ोन करूँ? क्लियरेंस है क्या? मैं करता हूँ, चलो ओके, अभी क्लियर। मैं अभी खान को फोन कर रहा हूँ, बुला लो, मैं आता हूँ। अभी हम लोग क्या चला आणि जाऊन बसा आणि त्याला अभी एक बार ऑर्डर ना बोलते खत्म हो गया, फिर हम लेके जाइए। होटल खाने में बिल्डिंग क्या है सलीम भाई, हमको कल कोई जॉब, हमको कल कोई कॉल नहीं,
बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अभी तुम मेरी बात सुनो, मेरे को बिल्डिंग की है, बिल्डिंग में तोड़े हम लोग, उसके में पैसा हम लोग क्यों नहीं मांगे, तो ये मालूम तुम्हारे को कि हम लोग यहाँ पे बराबर दादागिरी कर रहे थे, जब काम करते। अभी काम निकल गया, अभी नहीं चमचे लोग, सुनो ना, सुनो, खान ने बताना चाहिए ना, सब मालूम है, खान को मालूम है, सुनो, खान को मालूम है, सबको मालूम है। अरे भाई आउटसाइडिंग में मेरा 1.5-2 करोड़ रुपये बताएगा वो। हेलो, ऐसा जीवन बोल रहा हूँ सर। अभी आप हो क्लस्टर 3 में? मेरे ऑफिस पे पहुँचो ना। हेलो, क्लस्टर 3 में हो क्या? नहीं, वो बोला मैं क्लियरेंस सर और ये सलीम भाई है ना, हम लोग आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो अभी ऊपर आ जाए हम लोग 3rd फ्लोर पे, ये उनका ही आउटस्टैंडिंग का, तो एक बार मिल लेते हैं क्या? हाँ भाई, हाँ पहुँचो, हम लोग आप पहुँचो ऑफिस पर, ठीक है। अरे सर अभी तो वो बोलते थे ना माइकी में, मालूम है इसको यार, तो बोल तुम्हारा नाम ले रहे बोल, ये तो आपका नाम ले रहे इसके लिए। सलीम भाई बुलाओ ना उनको, सामने बुलाओ ना। एक मिनट दो, कौन दो उनको? खान साहब जरा आप आओ ना, बैठ के बात करते सब, जीवन भाई मैं और तुम और क्लियरेंस बात करते हैं। नहीं आप इनके ऑफिस में आ जाए ना, जीवन भाई All right, so that video that we were playing out for you essentially is of someone linked to the D gang threatening people who are working over there. I'm going to go back to Alicia on this one. Now, Alicia, there are two sides to the argument that have been made by the petitioner. One, of course, is that he says that the original land use plan was changed, and the Deputy Chief Minister also, of course, has spoken about the fact that this is going to be Bhindi Bazaar that will be replaced by just another Bhindi Bazaar. So that also questioning how this redevelopment is going to go forward. But the other side of the story is also, apart from the original plans, there are questions being raised about the funding of this project. Allegations coming in, that it's actually being funded by the D gang from overseas. Well, of course, Nupur, it's very important to understand, because this is something now under the scanner of Maharashtra government. Since the time when from Mahavikas Aghadi government has given a nod. We even saw there is an appreciation letter that has also been given by SBUT, that is Saifi Burani Upliftment Trust, clearly mentioning that they have given a go-ahead. So what is link now at this point of time? It's a link of SBUT with the D gang as well, because that is what has been claimed by Ajay Agrawal, who is the complainant, who has written several letters, whether to the BMC, whether to the NIA, whether to the ED, to the CBI, and also to the Maharashtra government, that is Chief Minister and Deputy Chief Minister as well. So all is taken into the consideration is what he has already mentioned. So the concerned authorities has been directed to look into it. So what he mentioned, that there is a Salim Fruit, who is a Salim Qureshi, or he was already arrested by National Investigation Agency over in connection with Dawood Ibrahim, the FIR that was registered by NIA. So now his involvement completely can be seen in the same location, that is in the Bhindi Bazaar redevelopment project, where he's been standing and giving a threat to the people as well. So which is why the nod that was given to by MVA by then in 2019, now the government has clearly mentioned that it should be under the probe, after which BMC has given a stop work notice to the SBUT as well. All right, Alicia reporting on that. Thank you for joining us. As Alicia is pointing out, there's a stop work notice that's been given by the BMC in this project. And in Assam, terror suspects have been arrested in Morigaon. 2 people have been arrested with links to the Ansar al-Bangla. The 2 have been arrested by the Morigaon police. One was arrested from Nagaon. Now, earlier, one madrasa was also demolished in Morigaon district after suspected links with the Ansar al-Bangla terror module. Let's go across to Anirudh, who is joining us with more details right now. Anirudh, to begin with, explain to us how these people are linked to terror outfits, and in what manner is this connected to the illegal madrasa that was earlier demolished in this area?
Yes, in fact, these two arrests has been made today morning, and we are getting to know that one of the accused is named Musaddiq Hussain, whereas other one is Ikramul Hussain. Both of them had been linked to the Ansarullah Bangla team and were actively involved into the nexus of the Ansarullah Bangla team here in Assam. They belong to the Morigaon module, where earlier also several others were arrested, along with madrasa was also demolished in that area. Investigation is still on, and their interrogation is also on. Not much have been revealed as of now, but yes, more details are awaited into this entire arrest that has been made. Right now, Anirudh, it has been a matter of concern for the Assam government, the fact that there are several of these madrasas that have sprouted up across Assam. The other aspect of it is also links which have now been established to various terror outfits. So give us an overall sense of how the government is moving forward in tackling this. Yes, as Assam Chief Minister had also earlier said that the case of the Ansarullah Bangla team has been already handed over to the NIA. One particular case has been handed over as of now, and we are getting to know from our sources in the police department that all the investigation, the entire investigation into the Ansarullah Bangla module will be subsequently handed over to the National Investigating Agency. And as you were rightly pointing out, it's a matter of concern not only for the state of Assam, but also from the national security point of view, because most of the masterminds of this terror module, which has been busted recently, have their roots in neighboring Bangladesh. So it's a major threat. And since Ansarullah Bangla team is ideologically and as you are pointing out, that's something that's been bothering the Indian government as well. And this crackdown essentially is a result of that. Thank you very much for joining us. And here's a look at what else is making news this morning. After the Silicon Valley of India, Bengaluru reeled under severe waterlogging as incessant rainfall lashed the city. The Aam Aadmi Party president of the Mahadevpura constituency slammed the BJP MLA Arvind Limbawali and said that the BJP should answer for areas that have submerged due to irregularities. In another highlight of the Indian Defence Forces, the Indian Army's impressive engineering skills came to the fore after a video depicting troops constructing a bridge across the Indus River. The video was titled Bridging Challenges. No terrain nor altitude is insurmountable and was shared on Twitter by the Southwestern Command of the Indian Army. The drill was carried out by the Sapta Shakti engineers in eastern Ladakh. The building of the bridge included carrying out mobility tasks and training. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has addressed a program for the government in Indore and lauded the Prime Minister for the construction of the Sardar Sarovar Dam. He also highlighted that the dam had helped both states flourish. Even as investigation in the Sonali Phogat murder case continues, the late actor's last film will be released. Phogat's last film has been titled Prerna. The director and producer has highlighted the project as a motivational film. Sonali Phogat's daughter Yashodhara also released the movie's poster. In a big development ahead of the Gujarat Assembly elections, the Aam Aadmi Party has claimed that its Ahmedabad office was raided by the police when the party supremo Arvind Kejriwal arrived in the state. Making this revelation, the Gujarat Aam Aadmi Party leader Isudan Gadavi has said that a search continued for about 2 hours, but nothing was found. As of now, there has been no confirmation of whether a raid took place. You're watching Republic TV, and still to come, we get you the latest from Gyanvapi, where security has been heightened. And also the top court is to hear over 200 PILs challenging the CAA today.
It's time for the third edition of the prestigious Ram Jethmalani Memorial Lecture. The biggest names on the most esteemed forum. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. The district judge A.K. Vishwesh had last month reserved the order till the 12th of September. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल। In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR region and recently registered cases against activities of terrorist gangs. Now, gangsters including Lawrence Lambia, Kaushal and Kala Jathedi are under the NIA scanner. The Supreme Court will hear the Karnataka hijab case. In the last hearing, the Supreme Court had said that the turban of a Sikh cannot be compared to a hijab. A 5-judge constitutional bench had decided that the turban and the kirpan are an essential part of Sikh religious identity. Army Chief General Manoj Pandey flew in an Apache attack helicopter of the Indian Air Force to the Ladakh sector and was briefed about capabilities and roles. Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding. सच हमने दिखाया, सच आपने देखा, हमारी पहचान उम्मीदों की रेखा, आपके भरोसे से हमारे काम का लेखा, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। आप पहचानते हैं, जानते हैं हमें, तभी तो अपना मानते हैं हमें। आर भारत के साथ भारत का समय, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। It's a Republic Mega exclusive, the key MBA project now under the lens for Dawood gang links. Massive corruption allegation over the MBA project. Project got MBA nod, now being probed. Mega NIA crackdown on terror, gangsters and links with terror under the lens. Pan-India NIA raids underway across 50 locations. Trouble mounts for Abhishek Banerjee's skin after being stopped at the airport. ED set to grill Menka Gambhir. All eyes on Gyanvapi Mandir versus the Masjid case as the Varanasi court is set to deliver the order today. Thank you for tuning into Republic TV viewers. So I'm Priyanka Sharma. We are live and breaking and straight away getting you all the updates of one of the most important stories that
we're tracking for you today on the Gyanvapi verdict. In fact, the prohibitory orders were clamped and the security tightened in the Varanasi ahead of the district court order on Monday on the maintainability of the plea on the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. Now, to maintain law and order, the entire city has been divided into sectors which have been allocated to the police force as per their requirement. And now directives for the flag march and foot march in sensitive areas have also been issued as well. Now, we have also been told about the kind of deployment of the security personnel that has been done just hours before the verdict is expected to be coming out as well. Viewers, there are several voices that we are picking up on the array. के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है उससे चॉपर जो है उससे वे यहां पर पहुंच रखे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सीधे हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चॉपर उतरेगा और उसके बाद फिर वे अपने काफिले की गाड़ियों के जरिए वे सीधे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आयोजन है और अपने आप में इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है क्योंकि 48 सालों के बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है जिसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन अगर जिक्र किया जाए तो 1974 में आयोजित किया गया था और 10:30 बजे का वक्त ठीक कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परिसर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल पर मंच पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रखे हैं। यही वो एक्सपो है जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस एक्सपो सेंटर में कुल 11 ऐसे हॉल बनाए गए हैं जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डेयरी उद्योग से जुड़े हुए कई विश्व स्तरीय प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया है, वो लगाई गई है। उसमें भी जो यहाँ पर लोग पहुँच रखे हैं वो इसका अवलोकन करने वाले हैं। अपने आप में बेहद खास ये प्रदर्शनी रहने वाली है। अलग अलग हॉल का जो नाम है वो अलग अलग गायों की प्रजातियों पर रखा गया है। जिस हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है उस हॉल को भी गिर प्रजाति की जो गाय है उसके नाम पर रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है। विजय सलील के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। All right, so we are seeing pictures of the Prime Minister's chopper landing in Greater Noida Exhibition Center, where the India Expo Mart, and this is to inaugurate World Dairy Summit. This is happening for the first time in the last almost 3 decades. The last was sometime in 1970s. It's a very significant event. India is the biggest producer of milk in the world and has the biggest milk cattle population in the world. And we have seen how it's a success story of India post-independence, beginning with the White Revolution, and now, of course, a stage where we are the biggest milk producer by far, not just milk, but milk products, including, things like ice cream, butter. So the Prime Minister there to showcase India's prowess and the manner in which this success story has really panned out post the White Revolution. We have consistently achieved the growth rate of 6% plus per annum in milk production, which is almost 3 times faster than the global average. And in the last 8 years itself, milk production has increased by as much as 40% plus. So those are important parameters, markers of India's success story in the recent past as well. The White Revolution, of course, going back to the 1980s and to the milkman Varghese Kuren. But remember the setting. It was in Gujarat and Prime Minister's home state. The Prime Minister has been closely involved in the experiment of cooperatives. Post his coming to power early 2000s, and since then we have seen Amul, for example, spread its wings across the country. So the Amul model in the last few years has been, perfected and implemented far and wide, including in the states
like Bihar and Bengal and Northeast. And I believe the Prime Minister is going to really showcase what all has been achieved through the platforms like AMUL and NDDB, the National Dairy Development Board. And of course, this is an industry summit, so there would be exchange of ideas. There is a technology exhibition on the best practices around the world. So it's going to be a good learning, networking experience for not just these corporates, these cooperatives, but also for the farmers associated with the dairying business and industry across the country, whosoever are able to travel. In fact, we are told that the government has made arrangements that through the cooperative networks, hundreds and thousands of farmers would be traveling to have a look at the exhibition, which is going to go on till 15th of September. In fact, later in the day, the Prime Minister now inaugurates the summit, but in the evening, Union Cooperatives Minister Amit Shah, who's also the Home Minister of the country, is going to spend more than a couple of hours at the summit venue and engage with the farmers, give them an idea of what all has been done in the cooperative sector. In fact, remember, the Modi government set up a separate cooperatives ministry for the first time in the country, and Union Home Minister is going to have dinner with the farmers in the evening. So essentially underscoring Modi government's commitment to dairying business through the cooperative. Well, absolutely. Abhishek Kapoor, our senior executive editor, really there getting us all the details as far as the Prime Minister is concerned, who is right now coming towards Greater Noida in the World Dairy Summit as well. Thank you, Abhishek, for joining us with those details. And shifting our focus back to the biggest story that we're tracking today, that of the Gyanvapi verdict, viewers, where in fact we were seeing how security has been tightened in Varanasi ahead of the district court order that is all set to come out today. And we are seeing the kind of extra police deployment that has also been done. But let's viewers first listen in to the petitioner Sohan Lal on the Gyanvapi verdict that is expected today. यह आने वाला आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है और आज का दिन हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं और यह देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशी वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहनलाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस समय हमारा नारा था ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम आज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 19 एनिवर्सरी एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 19 एनिवर्सरी एक्ट इसलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे तहखाने पर जो है दर्शन पूजन का अधिकार हो रहा था और वक्फ बोर्ड भी लागू नहीं होता यहाँ पर इसलिए कि 1936 मुकदमा नंबर जो है 62 1933 में भी खारिज हो गया था, जिसको लेकर के वह 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी खारिज हो गया और अंततः वक्फ बोर्ड यहाँ पर साबित नहीं होता, इसलिए वह खारिज होने वाला है। हिंदू समाज की विजय होने वाली है। वह 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय जिला जज फैसला सुनाने वाले हैं जो हम लोग के लिए औलतकारी होगा। धार्मिक आधार पर ये पूरा जो याचिका है वो रखी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा कि गौरी श्रृंगार पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार, यहाँ पूजा अर्चना 1991 के पहले से होती रही है और ये हमारा अधिकार है जो हमें आप दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर जब सर्वे होता है, कमीशन बनता है, सबसे पहले मुझे याद है आप ही बाहर आए थे और आपने कहा था कि महादेव के दर्शन हो गए। वो शिवलिंग दिखने के बाद में वो आकार जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी रही, उसके बाद आप लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। हाँ,
जैसे ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ और सर्वे के दौरान वहां पर जो करीब 35 फीट लंबा त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की कलाकृतियां, कमल के पुष्प कृतियां, शंख चक्र गदा पीपल के पत्ते और तो सारे साक्ष्य वहां प्रमाण थे। हम लोग का उत्साह और हिंदू समाज का उत्साह बुलंद हुआ और तो और जब तक अब तक जो है नहीं जानते थे और उसके बाद जैसे ही हमने बाहर निकले हम कहे बाबा मिल गए और आज पुनः कह रहे पहली बार कि यह आने वाला विजय, यह बाबा विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का आज दिन होगा। शिलान्यास बीजारोपण का आज दिन होगा। जाहिर बड़ी बात आपने कही है और आगे चूंकि लंबी लड़ाई है, अगर फैसला मान लीजिए आज आपके पक्ष में आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि दलीलें हमारे पास मजबूत हैं, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष दलीलें रख रहा है वो आपके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि उनका ये कहना है कि लागू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत हमने पेश किए हैं कि 93 तक व्यास जी वहां पर पूजा अर्चना करते थे। 1990 वर्शिप एक्ट वहां इसलिए नहीं लागू होता कि 3 ग जो है उसकी धारा में 3 ग के अनुसार ये होता कि 100 वर्ष पूर्व अगर उसका धार्मिक स्टेटस जो है जो भी रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वह है तो लागू होता है। तो वहाँ ज्ञानवापी में धार्मिक स्टेटस हिंदू जो है धार्मिक जो है हिंदू पद्धति का है, क्योंकि 93 तक व्यास जी थे और तो और वहाँ सैकड़ों वर्षों से यह है ज्ञानवापी के अवशेष सारे प्रतीक चिन्ह पूजा अर्चन होते रहते, सारे प्रतीक चिन्ह हिंदू से सनातन धर्म के बड़े पड़े। इसी आधार पर हम बार बार कहते हैं कि वह मंदिर है, वह मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। And there you have it, viewers. The petitioner we just heard in the Gyanvapi case and the salient points that have been discussed during the course of the legal arguments that have been presented before the court. And we will now see that the verdict today that is all set to come out, and because of which there is added security personnel that has also been deployed in Varanasi. Now, viewers, shifting our focus to the poll-bound state of Gujarat, where as we see that the face-off between the Aam Aadmi Party, in fact, continues in the national capital. Now we are seeing that the Aam Aadmi Party local leaders have also claimed that the Ahmedabad party office has been raided. In fact, Ishudan Gadvi, the state chief national general secretary of the Aam Aadmi Party, had also stated that there was a 2-hour-long raid that had been carried out at the Ahmedabad office of the Aam Aadmi Party, and this was in reference to Arvind Kejriwal coming to Gujarat for the next 2 days. He had landed in Ahmedabad late last night, and that is in reference of which Ishudan Gadvi has also stated that there were raids that had been conducted in the Aam Aadmi Party office. However, now we are seeing that the Ahmedabad police has completely denied the Aam Aadmi Party's claims of this raid. And the Ahmedabad police has stated that the news of the Aam Aadmi Party office being raided by the police has come to light through the social media, and no such raids have been carried out by the city police. Now, this is the latest in reference to the kind of claims that have been made by the Aam Aadmi Party leaders, who are stating that there was a raid that had been carried out by the Gujarat police, by the Ahmedabad police, and now we see that the police completely hitting back and stating that there were no such raids that had been conducted in Ahmedabad as well. Madhurima, my colleague, is also joining me with more details on the broadcast. Madhurima, tell us more about these kind of claims that are now being made. Why do you feel these are now being made in Gujarat? Because there were, of course, several raids that had been conducted on the Aam Aadmi Party leaders in the national capital, but now they're making false claims that raids had been conducted in Ahmedabad as well. And we'll connect with her in just a bit, viewers, as we are getting you all the updates as far as the latest response from the Ahmedabad police is concerned, who is now stating that there were absolutely no raids that had been conducted in the city of Ahmedabad by the Gujarat police as well. And that is why we are seeing that the claims of the Aam Aadmi Party leaders completely falling flat. We had seen Ishudan Gadvi and Gopal Italia, both of them also addressing a press conference on the same just a few minutes ago, and they had stated that there were raids that had been carried out, and they are claiming that this is because the BJP has been rattled since the Aam Aadmi Party has thrown their hat in the ring. Stay tuned for more updates on the other side. Right now, stepping into a very short break. मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम।
देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the northeastern Kharkiv region, which had been occupied by Russia in recent days. Kiev's army has been carrying out large-scale counter-offensive to reclaim Russia's occupied areas. Flames lit up this night sky at a power station on the western outskirts of Kharkiv after it was hit in a strike. The thick smoke was seen billowing into this air. Ukrainian officials meanwhile said that Kharkiv's TEC-5, which is the country's second biggest heat and power plant, had been hit in a Russian strike. Ukrainian President Zelensky marked 200 days since the country's war against Russia began by paying tribute to nation's military, emergency services and those who are suffering because of this conflict. President Joe Biden marked 21st anniversary of the September 11 attacks, paying tribute to extraordinary Americans who gave their lives as one of the nation's darkest days. The honorary consul of Tuvalu said that he hopes King Charles III's passion for tackling climate change will benefit the South Pacific Islands. He said that an independent island nation which is within the British Commonwealth has suffered problems brought on by climate change and that the island needs more help. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. The district judge A.K. Vishwesh had last month reserved the order till the 12th of September. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खास तौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया। And here's some news in brief, viewers. Ahead of the Gujarat Assembly polls, Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the Aam Aadmi Party office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that the Gujarat police found nothing at the party office as the leaders and the workers of the Aam Aadmi Party are hardcore honest, and there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. Prohibitory orders were clamped and security tightened in Varanasi ahead of the district court order on the maintainability of the plea of the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. The district judge had last month reserved the order till September the 12th. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खास तौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR region in recently registered cases against the activities of terrorist gangsters including Lawrence Bishnoi, Bambia, Kaushal and Kala Jatedi under the NIA scanner. The Supreme Court will hear the Karnataka hijab case. In the last hearing, the SC said that the turban of a Sikh cannot be compared with a hijab. A 5-judge constitution bench has decided that the turban and the kirpan are essential part of Sikhs' religious identity. दूध
जो हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों की गौरव बात करें तो 44% दूध का उत्पादन देश के अंदर। Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding the FIR registered against him in different states over derogatory remarks. Disengagement of Indian and Chinese soldiers from Gogra Hot Springs area in eastern Ladakh, which is underway, is on course to being wrapped up by today. Supreme Court to hear petition seeking permission to amend BCCI constitution today. The case has been on board of bench led by Justice D.Y. Chandrachud, but was adjourned multiple times due to paucity of time. And here's a quick look at what else is making news this morning. Ahead of the Gujarat Assembly polls, the Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the AAP office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that Gujarat police found nothing at the party's office as the leaders and workers of the Aam Aadmi Party are honest. Now, there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. Supreme Court is scheduled to hear over 200 PILs challenging the constitutional validity of the CAA. A bench headed by Chief Justice is scheduled to hear the petitions challenging the validity of the act, which triggered widespread protests pan-India. Prime Minister Modi will inaugurate International Dairy Federation World Dairy Summit today. The summit has been organized in Noida at 10:30 a.m. with over 50 countries that will be taking part. मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the northeastern Kharkiv region, which had been occupied by Russia in recent days. Kiev's army has been carrying out large-scale counter-offensive to reclaim Russia's occupied areas. Flames lit up this night sky at a power station on the western outskirts of Kharkiv after it was hit in a strike. The thick smoke was seen billowing into this air. Ukrainian officials meanwhile said that Kharkiv's TEC-5, which is the country's second biggest heat and power plant, had been hit in a Russian strike. Ukrainian President Zelensky है, उनके आय का स्रोत भी बढ़ता है और उनको जीवन यापन करने में कहीं ना कहीं जो आसानी होती है वो भी देखने को मिली। और बीते कुछ वर्षों में, आपने बिल्कुल सही बात कही अनुज, बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की जो आय है वो तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ उनके रहन सहन में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान की अगर हम बात करें, किसान उत्पादन पहले भी करता था, लेकिन उत्पादन में उसकी क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का किसी भी तरीके से कोई उसके पास साधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बढ़ावा दिया और ये कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को किसान तक, गांव तक पहुंचाना है, हमें उसके लिए वो। And slipping into a very short break here now. On that note, we'll be bringing you all the updates on the other side as the Prime Minister is there in Noida in Uttar Pradesh inaugurating the World Dairy Summit as well, and of course he will be addressing the people there on the World Dairy Summit as well. In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR region and recently registered cases against activities of terrorist gangs. Now, gangsters including Lawrence Lambia, Kaushal and Kala Jathedi are under the NIA scanner. The Supreme Court will hear the Karnataka hijab case. In the last hearing, the Supreme Court had said that the turban of a Sikh cannot be compared to a hijab. A 5-judge constitutional bench had decided that the turban and the kirpan are an essential part of Sikh religious identity.
Army Chief General Manoj Pandey flew in an Apache attack helicopter of the Indian Air Force to the Ladakh sector and was briefed about capabilities and roles. Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding the FIR registered against him in different states over derogatory remarks. Disengagement of Indian and Chinese soldiers from Gogra Hot Springs area in eastern Ladakh, which is underway, is on course to being wrapped up by today. Supreme Court to hear petition seeking permission to amend BCCI constitution today. The case has been on board of bench led by Justice D.Y. Chandrachud, but was adjourned multiple times due to paucity of time. And here's a quick look at what else is making news this morning. Ahead of the Gujarat Assembly polls, the Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the AAP office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that Gujarat police found nothing at the party's office as the leaders and workers of the Aam Aadmi Party are honest. Now, there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. Supreme Court is scheduled to hear over 200 PILs challenging the constitutional validity of the CAA. A bench headed by Chief Justice is scheduled to hear the petitions challenging the validity of the Act, which triggered widespread protests pan-India. Prime Minister Modi will inaugurate international... For this year's third edition of the Ram Jethmalani Memorial Series, the topic we have chosen is, has the need for a uniform civil code become an imperative today? The hijab issue, the nikah halala issue, the triple talaq issue, they've all suddenly landed up in the Supreme Court as with constitutional challenges. Had there been a UCC, perhaps these issues would have been ironed out. The speakers are both distinguished, very learned, they're well known, and this edition of the memorial lecture would make for extremely compelling viewing. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. All eyes are on the Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver its order today. It is a Republic mega exclusive. A key NVA project is now under the lens for Dawood gang links. Massive corruption allegation on the NVA project that got the NVA nod now being probed. It's a big NIA crackdown on terror. Gangsters and links with terror are under the lens. Pan-India NIA raids are underway across 50 locations. And trouble mounts for Abhishek Banerjee's kin after being stopped at the airport. The ED is set to grill Menaka Gambhir. Good morning and welcome. You're watching live and breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. Now, prohibitory orders have been clamped and security has been tightened in Varanasi ahead of the district court's order on Monday on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. Now, to maintain law and order, the entire city has been divided into sectors which have been allocated police force as per their requirement. Now, directives for a flag march and a foot march have also been given in sensitive areas. Checking has been intensified in the district's border areas. Let's listen in fact, to the arrangements that have been put in place. देखिए, पोषणीयता को लेकर के 7/11 की दरख्वास्त लगाई कि मामला कहीं से कहीं पोषणीय नहीं होगा। उस पोषणीयता को लेकर के जो दरख्वास्त लगी, उस पर 3-4 महीने की लंबी बहस चली। उसके बाद अब कल जो ये आज 12 तारीख रखी गई है, आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गूमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रीहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। देखिए,
1991 का एक्ट तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 1991 में जो एक्ट आया था उसके बाद नवंबर 1993 तक भी व्यास जी उस मस्जिद के तथाकथित मस्जिद के तहखाने में पूजा कर रहे थे और वहाँ बैरिकेडिंग लगा के उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिस्पोजेस किया। तो अगर कोई आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि पहले हमारे व्यास जी को वापस तहखाने में वो पोजीशन दें। किस लॉ और किस अथॉरिटी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको कब्जे से बाहर निकाला? कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था। उस लॉ के वायलेशन में आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में आपने व्यास जी को तहखाने से बाहर निकाला है। तो इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है और ये सूट में एविडेंस के पटल पे देखा जाएगा कि किसकी क्या एविडेंस है। आज की स्टेज पे मुस्लिम समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ आगे ना उठाइए। अगर हमने ये कह दिया कि ये एरिया वज़ू खाना है तो इसको वज़ू खाना मान लिया जाए, इसको फाउंटेन मान लिया जाए, इसको फवारा मान लिया जाए, इसका कोई एग्जामिनेशन ना हो कि भाई ये शिवलिंग है कि नहीं है। तो ये किस तरह का एक लीगल अप्रोच जो उन्होंने लिया है, तो उस लीगल अप्रोच के खिलाफ मेरा विरोध है, जिसके खिलाफ हमने अपने आर्गुमेंट्स मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, रूलिंग से कोर्ट के सामने रखें। सर, लीगली अगर समझा जाए, फैसला मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि आज आपके पक्ष में आने वाला है, पक्ष में आता है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, आगे हमने एप्लीकेशन दे रखी है इसमें 80G की, जिसमें जो इस वज़ू खाने के नीचे की दीवार है उसको हमने तोड़ने की मांग की है। कार्बन डेटिंग की मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट जाइए, तो वो एप्लीकेशन डाली जाएगी। फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कमीशन की रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको फाइनलाइज करके हम उसको कोर्ट की एविडेंस का पार्ट बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो फर्दर एविडेंसेस लीड की जानी हिस्टोरिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से, वो सारी बुक्स को एग्जिबिट किया जाएगा। Well, in fact, Madhurima is tracking all the developments that we are expecting today. We are expecting the order to be out in about 3 hours from now. Madhurima, good morning. To begin with, give us a sense of what you see around you. Of course, security has been heightened all across because this is believed to be a communally sensitive area and a communally sensitive verdict as well. Well, good morning to you too, Nupur. And yes, it is a very sensitive issue as far as Varanasi is concerned, because remember, even at the first time when the videographic survey was being conducted, there was a mob of hundreds that came outpouring from inside the mosque and did not allow the court-appointed team to even carry out the videographic survey, and that also went on into another case, following which the entire survey was conducted. In the last day, what it is being contested from the sides of the petitioner is that we heard Mr. Sohan Lal saying that Baba mil gaye. However, the case of which the verdict will come today is the maintainability, where the Muslim side, the Mosques Committee, is been contending that Act of 1991 Worship Act applies there. However, the Hindu side is contesting that when they are allowed to worship once a year at Gauri Shingar temple, why not they be allowed to worship any time they wish? Because the petitioners, these 5 women, have approached the court seeking a freeway pass to step inside the Gauri Shingar temple and worship whenever they want. As of now, the rule says that they are only allowed to worship on the 4th day of Chaitra Navratri. That is the one day they are allowed, and they go and offer prayers at the Gauri Shingar temple. However, they have been contesting, the Hindu petitioners have been contesting that even if the act applies, there is a Hindu structure over which the dome of the mosque was built. So if we are even contesting that applies to the temple as well, because the basic structure is that of a temple, and which is why a videographic survey was ordered by the court so as to determine whether it's a temple or not. And what we've learnt is that yes, there have been findings that marks of swastik, lotus mark and the Trishul mark, all of these engravings are there. Stay with us, Madhurima. Where the entire survey was conducted. Stay with us, Madhurima. In fact, as we are waiting the orders from the court, let's also go across to Varanasi right now, where one of our correspondents is on the ground. He's taking us through what we are expecting.
आज इस पूरे मामले पर होंगी, जब AK विश्वेश जो जिला जज हैं वो इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे कि क्या ये मामला पोषणीय है या नहीं, क्या इस मामले को हम आगे लेकर जा सकते हैं। समझना होगा निधि इस बात को भी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले पर, और पोषणीयता के सवाल पर कहीं ना कहीं से दोनों पक्षों को जिला जज ने सुना, जिसके बाद अब आज फैसले का वो दिन है। फैसले के वो दिन कैसी तस्वीरें हैं मैं चाहूंगा एक बार आप देखें, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर हलचल आज वाराणसी कोर्ट में बहुत तेज है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि जब 2 बजेगा जज AK विश्वेश अपनी सीट पर बैठेंगे, क्या फैसला वो सुनाएंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि पोषणीयता पर जो स्थितियां थी निधि, शुरुआत से किस तरह से दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई, वादी पक्षों प्रतिवादी पक्षों दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। दोनों पक्षों ने ये बताया कि आखिर उनका मामला पोषणीय है तो क्यों है, और अगर पोषणीय नहीं है तो क्यों नहीं है। इन दोनों के बीच 24 तारीख जब 24 अगस्त को इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया, काउंटर किया गया अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से, और इस काउंटर के बाद 12 तारीख यानी आज का दिन मुकर्रर किया गया जब कोर्ट फैसला सुनाएगी इस पूरे मामले पर। एक बार अभिषेक। All right, so that's a sense of what we are understanding of how sensitive this area is. The security has been heightened all across Varanasi, and obviously what happens today will have a bearing of how this case goes forward in the future as well. Do remember that the Supreme Court for now is also going to be hearing the case in October. Madhurima, thank you for joining us. We'll come back to you later. All right, we are now going back to the other big story that we've been tracking since this morning. The National Investigation Agency is conducting raids at about 50 locations. 25 of those locations are believed to be in Punjab. Now, raids are being conducted in connection with various terrorist gangs who've been accused of extortion, drug smuggling, as well as other criminal activities. Let's go across, I think, to Amandeep, who's reporting from Chandigarh. He's at one of the locations where these raids are being conducted. Amandeep, these raids, of course, are are being conducted even as there is a fear that these criminal gangs who are operating not just from India but from overseas are actually increasing their activities across North India. And that, of course, has been brought to the fore by the brazen manner in which Sidhu Moosewala was murdered. Well, absolutely. 2 incidents that was actually highlighted the connection of the gangsters with the anti-national people. And in fact, number 1 is that RPG attack on Punjab Intelligence Headquarters. And number 2 incident is Sidhu Moosewala's murder case. In both the cases, gangsters were involved, and in fact, they are getting the back from the terrorists cross the border. And right now, Nupur, we are at the location of the raid where NIA is searching a residence of a gangster Lucky Patel. You can see this is village Khudda, Lahora in Chandigarh, and in fact NIA team is still inside. They are carrying out the raid, they are verifying the documents, they are questioning the people here inside, and in fact this is the house of Lucky Patel, who was actually said to be involved in the Vicky Migru Kheda murder case, who was a key conspirator. Though he was not here, he is absconder, and in fact his house is being searched, and 25 like other locations of different gangsters, including Lawrence Bishnoi, Goldie Barad, Jaggu Bhagwanpuria, Shubham, and different locations in Punjab. This raid is being carried out at one time, 4 a.m. in the morning, and 50 locations across the country and 25 locations in Punjab itself. And this is one of the locations from where we are reporting. Basically, the nexus has been exposed between the gangsters as well as the terrorists, and in fact these gangsters are now getting the financial support, getting the shelter, getting every kind of assistance from the cross border, from the terrorists, and that is the reason NIA has initiated the investigation to break down this network. And even the Punjab police has also highlighted from past few incidents, it has been learned that there is a strong nexus is being developed by these young gangsters who are being backed by the pro-Khalistani terrorists and the other anti-national people as well. And that is the reason they are getting
an easy access to the weapons. They are getting an easy access to the logistics, to the shelters, and even after carrying out certain kind of incidents, they have an easy go. Not only in the India, but yes, they are managed to flee from the country to the other countries as well. They are getting a proper shelter, not here in India, in the different parts of India, but yes, in Dubai, in Canada, in US, in Germany, and even you can see the visuals that Chandigarh police is also here, and this raid is being conducted. At one time, 50 locations across the country, 25 locations in Punjab. All the gangsters who were involved in certain kind of extortions, killings, terrorist activities, their all residents were being searched by the NIA this time. And even the Punjab police has also confessed that a terrorist angle is being established with the gangsters. Well, Nupur, it goes like earlier the gangsters were involved into the road rage cases, highway robberies, extortions. But now, since they are getting the back from the terrorist cross-border sitting in the Pakistan, like Harvinder Singh Brinda, Vadhava Singh, and even Jasbir Singh Rode. Yes. Absolutely. Amandeep, the other aspect of it Yes, that's extremely important and is bothering the NIA as well as security agencies across the country is the fact that, narcotics are being smuggled from across the border. They're then sold, and that money is being used to fund terror operations in India. Now, is that aspect also part of the investigation that the NIA has undertaken? Well, absolutely. Well, Nupur, the western borders were being exploited by the terrorists sitting in the Pakistan. And in fact, every single day they are sending the weapons, drugs through drones, and even they have also sending the money through Hawala transactions as well. I request my camera person to kindly show you the visuals of this residence where the NIA is continuously conducting the raid. And even, Nupur, the point is that these gangsters are getting very easily access to the weapons, to the money, to the drugs, and even to expand their network as well. And in fact, they have given the directions from the anti-national people who are actually sitting in the Pakistan and even in the other countries as well. And they are directed them how to carry out the anti-national activity in Punjab. And that is the reason every second day the Khalistani posters, pro-Khalistani flags are being hosted in the Punjab at the different places. Though police are arresting them, though police has taken into the custody, police is conducting the investigation in the entire matter. Right. But the point is that now the people who are sitting abroad, who are actually considered as a terrorist of the country, they are injecting the money, they are hiring the people, they are throwing the money to the gangsters like Ronesh Bishnoi, Jaggu Bhagwanpuri and Davinder Mambiha gang, and in fact they are asking them to carry out certain kind of anti-national activities to establish their agenda here in Punjab and even here in nation as well. Absolutely. As you're pointing, as Amandeep, of course, is pointing out, there are certain gangs who are under the radar who actually are operating out of Canada. For instance, Goldie Brar, he's been someone who's believed to be behind the Sidhu Mosewala murder case as well. Thank you very much, Amandeep, for joining us. And here's a look at what, all right, as we've been pointing out, of course, this is something that is being investigated now by the NIA. The NIA is taking over these investigations because it is believed that these gangs have a pan-India presence now. And here's a look at what else is making news. Involvement of terrorist activities of the D gang in Mumbai's real estate market has now come to light as a video was accessed of a previously arrested Dawood aide Salim Fruit threatening real estate developers. Maharashtra's Deputy Chief Minister has called for an investigation in connection with the project that's linked to the gang, found to have irregularities after an approval by the MVA government. Raids by the NIA are underway at least 50 locations as a crackdown on terror gangs engaging in killings and other illegal activities have come to the fore. The raids are being conducted in states such as Punjab, Haryana, Rajasthan and the NCR. Security has been stepped up outside the Gyanvapi mosque ahead of the verdict on the site to be pronounced at the local district court in Varanasi. The police are further engaging in investigating hotels and other establishments in the city. The TMC MP Abhishek Banerjee's sister-in-law, Menika Gambhir, was summoned to the ED's office in Kolkata at 12:30
last night in connection with the coal smuggling case. However, upon reaching the office as per time mentioned in the summons, the office was found to be closed. Manika Gambhir is further expected to be called in for questioning today. The Delhi Chief Minister and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal claims that his party's office in Ahmedabad was raided by the police as the BJP had been rattled by the support that the Aam Aadmi Party was receiving in Gujarat. 4 out of 6 convicts who escaped from a prison in Meghalaya in the forest area near Jowai were lynched by a mob of locals in the region. 5 staff of the Jowai prison were further suspended and arrested for the jailbreak. Personnel of the SSB and the CRPF defused at least 15 IEDs in the Chakrabandha forest in Bihar in a joint operation by forces. The region IEDs were discovered and have been reported as a Maoist stronghold. The BJP and the PDP are reported to have called in core group meetings in Jammu and Kashmir amid political atmosphere springing back to action as political parties try to go back to the people. A rift has been reported in the JDU and has come to the fore as Bihar's Food and Consumer Protection Minister Leshi Singh has filed a defamation notice worth about 5 crore rupees against the JDU MLA Bhima Bharti. Bhima Bharti had earlier attacked the minister over her selection in the Bihar cabinet. And members of the TMC are alleged to have attacked a BJP rally in the district of Matbhanga in West Bengal with claims that members of the party bombed the rally. The BJP leader Ajay Roy's vehicle was further destroyed during the rally. Well, prohibitory orders have been put in place and security has been tightened in Varanasi ahead of the district court orders today on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. Now, to maintain law and order, the entire city has been divided into sectors which have been allocated to police forces as per their requirement. Directives of a flag march and foot march in sensitive areas has also been issued. Checking has been intensified in the district's border areas, hotels and guest houses, while an eye is also being kept on the social media. Now, the district judge A.K. Vishvesh had last month reserved the order till today in the communally sensitive matter. 5 women had filed the petition seeking permission for daily worship of Hindu deities whose idols are said to be located on the outer wall of the Gyanvapi mosque. All right, this order of the District Court, of course, comes out soon, and as we've been pointing out, security has been enhanced around the mosque complex. But today's order will essentially only decide on the maintainability of the plea. There is, do remember, that a simultaneous hearing that will take place in the Supreme Court that's slated for October. And let's listen into reactions that we are getting from either side before the order comes out. देखिए, पोषणीयता को लेकर के 7/11 की दरख्वास्त लगाई कि मामला कहीं से कहीं पोषणीय नहीं होगा। उस पोषणीयता को लेकर के जो दरख्वास्त लगी उस पर 3-4 महीने की लंबी बहस चली। उसके बाद अब कल जो ये आज 12 तारीख रखी गई है, आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गूमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रीहेंसिव थी, और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज्ञानव्यापी पर बीजेपी को जो ये एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं धार्मिक मुद्दे पर, भगवान राम को नहीं छोड़ा, बजरंगबली को नहीं छोड़े, हनुमान जी को भी नहीं, और
We've been speaking to either side, and the Hindu side's petitioner, of course, has maintained that this was a temple, and that basically the contentions that the Hindu side is making is that they should be allowed to pray at this site because that's allowed for once a year. That's the basic contention. And also the Muslim side, of course, says that this is in contravention to the Places of Worship Act of 1991. Let's go across to Shrishti, who's reporting from here. Shrishti, to begin with, give us an update in terms of what you see around you. Of course, security has been heightened given how sensitive this matter is. बिल्कुल नुपुर, देखिए जैसा आप लगातार बता रही हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है, आपको तस्वीरें हम सिक्योरिटी की ही दिखा दे रहे हैं। आपको ये काशी विश्वनाथ मंदिर का 4 नंबर गेट है जो बेहद अहम है, कॉरिडोर बना, और उसके बाद यहीं से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये तमाम सुरक्षा यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लगातार कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि जो यात्रा करने के लिए लोग पहुंचे हैं, यानी कि महादेव के दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं, उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज का दिन सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है। इस पूरे एरिया में धारा 144 लागू की गई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि एक साइड से, एक लाइन से जो तमाम लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो जाएं, और माहौल यहां पर किसी भी तरीके से विपरीत ना हो, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2 बजे के बाद में आज फैसला आना है इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर, पोषणीयता को लेकर यह फैसला आना है कि ये केस सुनने लायक है या नहीं है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की दलीलें देता रहा, इस बात की अपील करता रहा कि ये जो मामला है वो 1991 वर्शिप एक्ट वो इसमें लागू होता है और यहां पर पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार अपनी यही दलीलें देता रहा कि 1993 तक व्यास जी यहां पर पूजा अर्चना करते थे। इसके तमाम सबूत हैं, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए ये जो तथ्य हैं वो पुख्ता है हमारे पास में, और इस पूरे मामले में सुनवाई आगे जारी रहनी चाहिए। और बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज एक अगर जीत होती है, अगर हिंदू पक्ष में फैसला आता है, तो लड़ाई अभी खत्म नहीं, बल्कि अभी लड़ाई की शुरुआत होगी, अभी आगाज होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि इस मामले के बाद में सीधे एक और याचिका दाखिल की जाएगी, एक और बात दाखिल किया जाएगा, जिसमें ये इस बात की मांग की जाएगी कि इससे पहले सर्वे हुआ, लेकिन एएसआई सर्वे की मांग की जाएगी, तहखाने को खुलवाया जाएगा। उसमें जो अवशेष बताए जा रहे हैं कि अवशेष दबे हुए हैं, उसे खुदाई करने की परमिशन मांगी जाएगी। जो बीच में दीवार है, नंदी और शिवलिंग, जो शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, उसके बीच की जो दीवार है उसे तोड़ने का आदेश मांगा जाएगा। इसके साथ ही जो आकृतियां वहां पर बनी हुई है मंदिर की दीवार पर, मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल देखा गया, शंख देखा गया, ये तमाम वो सबूत हैं, वो तथ्य हैं जो यहाँ पर देखे गए, जिसके बाद हिंदू पक्ष बहुत पुख्ता तरीके से बात रख रहा है कि केस हमारा मजबूत है। जी, absolutely. But as you're pointing out, the question at the heart of it also is the fact whether worship can continue or not, and whether it can be held at various points in time or not, because the Hindu side says that worship has been happening and it must be allowed to go forward. But the Muslim side also says that that essentially is in contravention to the Places of Worship Act that was established in 1991, which essentially says that the status quo of all religious places will be maintained post 1991. बिल्कुल ऊपर देखिए, जैसा आपने कहा कि सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि क्या पूजा यहाँ पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि 1991 का जो जिक्र बार बार यहाँ किया जा रहा है। विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले के वकील हैं, उन्होंने तमाम जो जरा कोर्ट में की है, उनका यही कहना है कि ये जो एक्ट है, जिसकी दलील यहाँ हथियार बनाकर यहाँ दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो दलील जो है हमारे पक्ष में है। वो फेवर 1991 का जो एक्ट है वो हमारे फेवर में आएगा। इनकी ये दलील इनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि 1993 तक ये देखा गया है, इस बात का पुराणों में जिक्र है, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर पूजा होती रही है। इसीलिए हमें उसका अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जहां त्रिशूल के निशान हैं, जहां स्वास्तिक के निशान हैं, जहां शंख बने हुए हैं, जहां से शिवलिंग नुमा एक चीज दिखाई देती है जो कि सीधे नंदी के सामने है और बीच में एक दीवार है, तो इन सब बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लोगों का, हिंदू पक्ष का यह भी मानना है कि अगर खुदाई होती है, इस पूरे मामले में फैसला उनके पक्ष में आता है, खुदाई की जाती है, तो मूर्तियों के अवशेष मिलेंगे वहां पर, क्योंकि शंख बने हुए हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मस्जिद के भीतर में स्वास्तिक और शंख और भगवान की आकृतियां जो हैं वो दीवारों पर बनी हुई हैं। राइट।
Right, absolutely. Thank you very much for joining us. Now, we are, of course, waiting for that order to come in about a couple of hours from now. It will also, of course, set in motion as to how this case then goes forward. You are watching Republic TV. We will continue to bring you the latest on this. We slip into a very short break here. Do stay with us. Ukrainian President Zelensky marked 200 days since the country's war against Russia began by paying tribute to nation's military, emergency services and those who are suffering because of this conflict. President Joe Biden marked 21st anniversary of the September 11 attacks, paying tribute to extraordinary Americans who gave their lives as one of the nation's darkest days. The Honorary Consul of Tuvalu said that he hopes King Charles III's passion for tackling climate change will benefit the South Pacific Islands. He said that an independent island nation which is within the British Commonwealth has suffered problems brought on by climate change and that the island needs more help. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. The district judge A.K. Vishwesh had last month reserved the order till the 12th of September. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल। In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR. सच हमने दिखाया, सच आपने देखा, हमारी पहचान उम्मीदों की रेखा, आपके भरोसे से हमारे काम का लेखा, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। आप पहचानते हैं, जानते हैं हमें, तभी तो अपना मानते हैं हमें। आर भारत के साथ भारत का समय, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। Top stories at 11:30. Viewers, all eyes on the Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver the order today. It's a Republic Mega exclusive key MBA project now under the lens for Dawood gang links. Massive corruption allegations on the MBA project that got MBA nod now being probed. Mega NIA crackdown on terror, gangsters and links with the terror under lens. Pan-India NIA raids underway across 50 locations. And trouble mounts for Abhishek Banerjee's skin after being stopped at the airport. ED set to grill Menka Gandhi. And straight away going across to some breaking updates that we're picking up, viewers, on a big statement. Tejasvi Yadav has stated that Nitish Kumar and he will meet Sonia Gandhi very soon. When he was asked if the RJD chief Lalu Prasad Yadav and Bihar chief minister Nitish Kumar will meet the Congress interim president Sonia Gandhi together in Delhi, Tejasvi has said that once Sonia Gandhi comes back, there will be a meeting. Both of them will be going together to meet as well.
Now, this is a massive statement coming in from Tejasvi Yadav now, viewers, where he has stated that both Nitish Kumar and he himself will go and meet with the interim chief of the Congress party, Sonia Gandhi, and that as soon as Sonia Gandhi comes back, there will be a meeting between the three of them, that is Nitish Kumar, Tejasvi Yadav and Sonia Gandhi as well. Now remember, this also comes in the backdrop of the kind of opposition meetings that have been going on by Nitish Kumar in the national capital, where he had been meeting with the Congress leaders along with the Aam Aadmi Party chief and several other opposition leaders as well in the past few weeks. Now following this, we see a massive statement coming in from Tejasvi Yadav. Viewers, let's listen into that first. नहीं, आप एक बात समझिए, सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है और हम तो पहले भी कहे हैं कि अब सोनिया मैडम आएंगी, हम तो गए ही थे मुलाकात करने, आपको भी पता है जब हम ओथ लिए थे उसके बाद हम जाकर के सोनिया जी से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार हैं वापस आएंगी तो दोनों लोग नेता जो है मिलने जाएंगे और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है ना, सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया। Now viewers, that is a massive statement coming in, a massive political development as well that we are tracking for you with respect to Tejasvi Yadav, making it clear that both Tejasvi Yadav and Nitish Kumar will go and meet with Sonia Gandhi as soon as she comes back as well. Now this comes in the backdrop of the back-to-back meetings, viewers, that Nitish Kumar had also been carrying out in the national capital, and now we see Tejasvi Yadav echoing those statements of Nitish Kumar as well. And moving on now, viewers, to some more breaking updates that we are picking up with respect to the controversial case of Sonali Phogat. Now, after repeated requests from the family, Goa Chief Minister Pramod Sawant has finally taken cognizance of these requests, and he has in fact decided to hand over Sonali Phogat's murder case to the CBI. Now, we had seen the kind of controversy that had erupted over Sonali Phogat's murder. The conspiracy that had also really come to light with respect to the accused that had been planning for quite some time to get Sonali Phogat to Goa as well. And of course, how she had also been fed with drugs, and we had seen how the investigation in that area was also being conducted by the authorities, post which we have in the latest that the Curly's restaurant that had also been demolished, and now we are seeing in the backdrop of these repeated requests from the family, Goa Chief Minister has taken cognizance and decided to hand over the murder case to CBI. My colleague Alisha is also joining me on the broadcast with more details. Alisha, tell us more about this latest decision that has been taken by the Goa Chief Minister. He has stated that the entire investigation will now be handed over to the CBI. What more can you tell our viewers? Well, yes, it's an official from Goa Chief Minister Pramod Sawant clearly mentioning that it's a repeated request that has been made by Sonali Phogat family to hand over the case to Central Bureau of Investigation, after which state government has decided to hand over the case to CBI. Whether the fact, he also mentioned that Goa police has reached to an end, and of course there are getting many much evidence in the entire case. Moreover, he has a faith on his own police officials, but there is a request repeatedly that has been made by family of Sonali Phogat to hand over the case to CBI to reach out to the conclusion over the case. So now the Goa government has decided to hand over the case to CBI. Will wait where the officially it will be handed over to CBI, because as of now we heard from Pramod Sawant itself, who mentioned that it has decided only after the request that has been made, because we even saw Yashodhara, who is a daughter of Sonali Phogat, continuously meeting people, whether it is Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, or even yesterday she was in the Panchayat where she was requesting for the CBI to take over the case, and this is something, a case that has to be looked by the Central Bureau of Investigation. The only request that was made by the family, and now this coming an official from the Goa Chief Minister as well, that the case state government has decided to hand over the case to Central Bureau of Investigation. But of course, Alisha, you have been bringing us all the updates of this entire investigation as well. Stay on with us as we listen into that soundbite of the Goa Chief Minister also stating that the investigation will be handed over to the CBI.
हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम के साथ बात हुआ? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। कंप्लीट जाए दे लेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाए दे लें बट तो कंटिन्यूसली। सोनाली फोगट का हरियाणा को गया था, टीम में वापस आ गया था। सोनाली फोगट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम के साथ बात हुआ? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। कंप्लीट जाए दे लेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाए दे लें बट तो कंटिन्यू। Well, all right. Let me also once again go back to my colleague Alisha, who's been tracking the entire investigation from the very start. Alisha, if you could also tell our viewers as to how far the investigation has gone on, what are the authorities in the latest telling you, and what has really led to this decision of Pramod Sawant saying that the investigation now needs to be handed over to the CBI? Well, yes, sir. As far as this case is concerned, we know that Goa police authorities already went to Haryana and they have searched even the resident of Sudhir Sangwan, who is the main accused in the case, and right now in judicial custody. Also, they went to Sonali Phogat resident and also recovered some of her jewelries and also cash and passport, other documents has already been seized. And moreover, the team that from Goa that went to Haryana was only on the property angle. The claim that was made by Sonali Phogat family clearly mentioning that Sudhir Sangwan killed Sonali Phogat to grab her property. So, well, in that angle where the Goa police team has went to Haryana, now they are back, and there are some of the report that has already been submitted to the deputy SP, because now the case which was given under deputy SP from police inspector. Moreover, what exactly we even will wait for even the Viscera report. But today only where Chief Minister Pramod Sawant has clearly mentioned that he is going to send a letter to Home Minister to hand over the case to the Central Bureau of Investigation. And this is something, a request that was continuously made by the family of Sonali Phogat, whether it is a daughter or whether it is brothers who are coming and meeting the people as well. They even Arvind Kejriwal, who is the Delhi Chief Minister, and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, who met Sonali Phogat daughter in Hisar, they have demanded for the CBI investigation. But if we point out some of the main point that has been made by Chief Minister Pramod Sawant, clearly mentioning that the Goa police has been doing a great job and they have a full faith over the case. But that is something, the repeatedly request that has been made by the family of Sonali Phogat, which is why the state government has decided to hand over the case to Central Bureau of Investigation. And today only, where Chief Minister is going to write a letter to Home Minister, clearly clearly handing over the case to CBI. Well, all right, Alisha, stay on with us as we listen into Pramod Sawant once again, and then we'll be coming back to you for more updates. But viewers, let's listen into what Pramod Sawant had to say about handing over the entire investigation of the Sonali Phogat murder case to the CBI. But सर सोनाली फोगट का हरियाणा को गया था, टीम में वापस आ गया था। सोनाली फोगट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं,
लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती हैं। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए
निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है, उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। पशु आधार के जरिए पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं, इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन।
राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the northeastern Kharkiv region, which had been occupied by Russia in recent days. Kiev's army has been carrying out large-scale counter-offensive to reclaim Russia's occupied areas. Flames lit up this night sky at a power station on the western outskirts of Kharkiv after it was hit in a strike. The thick smoke was seen billowing into the air. Ukrainian officials meanwhile said that Kharkiv's TEC-5, which is the country's second biggest heat and power plant, had been hit in a Russian strike. Ukrainian President Zelensky marked 200 days since the country's war against Russia began by paying tribute to nation's military, emergency services and those who are suffering because of this conflict. President Joe Biden marked 21st anniversary of the September 11 attacks, paying tribute to extraordinary Americans who gave their lives as one of the nation's darkest days. The Honorary Consul of Tuvalu said that he hopes King Charles III's passion for tackling climate change will benefit the South Pacific Islands. He said that an independent island nation which is within the British Commonwealth has suffered problems brought on by climate change and that the island needs more help. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shingar Gauri case. The district judge A.K. Vishwesh had last month reserved the order till the 12th of September. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल। In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR region. का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding the FIR registered against him in different states over derogatory remarks. Disengagement of Indian and Chinese soldiers from Gogra Hot Springs area in eastern Ladakh, which is underway, is on course to being wrapped up by today. Supreme Court to hear petition seeking permission to amend BCCI constitution today. The case has been on board of bench led by Justice D.Y. Chandrachud, but was adjourned multiple times due to paucity of time. And here's a quick look at what else is making news this morning.
Ahead of the Gujarat Assembly polls, the Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the AAP office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that Gujarat police found nothing at the party's office as the leaders and workers of the Aam Aadmi Party are honest. Now, there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. Supreme Court is scheduled to hear over 200 PILs challenging the constitutional validity of the CAA. A bench headed by Chief Justice is scheduled to hear the petitions challenging the validity of the act, which triggered widespread protests pan-India. Prime Minister Modi will inaugurate International Dairy Federation World Dairy Summit today. The summit has been organized in Noida at 10:30 a.m. with over 50 countries that will be taking part. मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the... In another highlight of the Indian Defence Forces, the Indian Army's impressive engineering skills came to the fore after a video depicted the troops constructing a bridge across the Indus River. The video was titled, "Bridge King Challenges No Terrain Nor Altitude Insurmountable," and was shared on Twitter by the Southwestern Command of the Indian Army. The drill was carried out by the Sapta Shakti engineers in eastern Ladakh. The building of the bridge included carrying out mobility tasks and training. The video depicts the mechanical launch of heavy metal parts into the water body as the bridge is shown to be completed at the end of the video. Army personnel engrossed in teamwork can be seen in the exercise while heavy trucks cross the terrain after the bridge has been completed. Bureau Report, Republic TV. In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out raids at around 50 locations in different parts of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi NCR region in recently registered cases against activities of terrorist gangs. Now, gangsters including Lawrence Lambia, Kaushal and Kala Jathedi are under the NIA scanner. The Supreme Court will hear the Karnataka hijab case. In the last hearing, the Supreme Court had said that the turban of a Sikh cannot be compared to a hijab. A 5-judge constitutional bench had decided that the turban and the kirpan are an essential part of Sikh religious identity. Army Chief General Manoj Pandey flew in an Apache attack helicopter of the Indian Air Force to the Ladakh sector and was briefed about capabilities and roles. Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding the FIR registered against him in different states over derogatory remarks. Disengagement of Indian and Chinese soldiers from Gogra Hot Springs area in eastern Ladakh, which is underway, is on course to being wrapped up by today. Supreme Court to hear petition seeking permission to amend BCCI constitution today. The case has been on board of bench led by Justice D.Y. Chandrachud, but was adjourned multiple times due to paucity of time. And here's a quick look at what else is making news this morning. Ahead of the Gujarat Assembly polls, the Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the AAP office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that Gujarat police found nothing at the party's office as the leaders and workers of the Aam Aadmi Party are honest. Now, there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. All eyes are on the Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver its order today. मंदिर ही है, मंदिर के तोड़ करके उसके ऊपर
मात्र गुंबज बना के नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाए। Ahead of the crucial verdict, the Hindu side maintains claims as it's a mandir. It is a Republic TV mega exclusive. A key MVA project is now under the lens for Dawood gang links. Massive corruption allegation on the MVA, the project that got the nod from the government, is now being probed. Mega NIA crackdown on terror. Gangsters and links with terrorists are under the lens. लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। The Goa Chief Minister says they are handing the probe over in the Sonali Phogat murder case to the CBI. Good afternoon and welcome. You are watching Live and Breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. Straight off to the big story that we're tracking here. We're expecting a verdict, rather an order, to come in the Gyanvapi mosque case in about a couple of hours from now. But even as we await that, prohibitory orders have been clamped and security has been tightened in Varanasi ahead of the district court's order today on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Shringar Gauri case. We are, of course, continuing to get various reactions that are coming in from parties involved in the case as well as others. Let's in fact listen into another reaction. देखिए, हमें लगता है हमारे देश के लोग बहुत परिपक्व लोग हैं, और आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो न कहीं पर भी जीत का जश्न नहीं हुआ था, हार का हाहाकार नहीं हुआ था, और समाज के सभी वर्गों ने इसको एकजुट होकर के और स्वीकार किया था। जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सबको सम्मान के साथ और सद्भावना के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह आने वाला आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है, और आज का दिन हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं, और यह देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशी वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहनलाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस समय हमारा नारा था ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम समाज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 1990 वर्षिप एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 1990 वर्षिप एक्ट इसलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे तहखाने पर जो है दर्शन पूजन का अधिकार हो रहा था, और वक्फ बोर्ड भी लागू नहीं होता यहाँ पर इसलिए कि 1936 मुकदमा नंबर जो है 62 1933 में भी खारिज हो गया था, जिसको लेकर के वह 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी खारिज हो गया, और अंततः वक्फ बोर्ड यहाँ पर साबित नहीं होता, इसलिए वह खारिज होने वाला है। हिंदू समाज की विजय होने वाली है। वह 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय जिला जज फैसला सुनाने वाले हैं, जो हम लोग के लिए आह्लादकारी होगा। धार्मिक आधार पर ये पूरा जो याचिका है वो रखी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा कि गौरी श्रृंगार पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार, यहाँ पूजा अर्चना 1991 के पहले से होती रही है और ये हमारा अधिकार है जो हमें आप दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर जब सर्वे होता है, कमीशन बनता है, सबसे पहले मुझे याद है आप ही बाहर आए थे और आपने कहा था कि महादेव के दर्शन हो गए। वो शिवलिंग दिखने के बाद में वो आकार जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी रही, उसके बाद आप लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। हाँ,
जैसे ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ और सर्वे के दौरान वहां पर जो करीब 35 फीट लंबा त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की कलाकृतियां, कमल के पुष्प कृतियां, शंख चक्र गदा पीपल के पत्ते और तो सारे साक्ष्य वहां प्रमाण थे। हम लोग का उत्साह और हिंदू समाज का उत्साह बुलंद हुआ और तो और जब तक अब तक जो है नहीं जानते थे और उसके बाद जैसे ही हमने बाहर निकले हम कहे बाबा मिल गए और आज पुनः कह रहे पहली बार कि यह आने वाला विजय यह बाबा विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का आज दिन होगा। शिलान्यास बीजारोपण का आज दिन होगा। जाहिर बड़ी बात आपने कही है और आगे चूंकि लंबी लड़ाई है, अगर फैसला मान लीजिए आज आपके पक्ष में आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि दलीलें हमारे पास मजबूत हैं, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष दलीलें रख रहा है वो आपके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि उनका ये कहना है कि लागू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत हमने पेश किए हैं कि 93 तक व्यास जी वहां पर पूजा अर्चना करते थे। 1920 वर्शिप एक्ट वहां इसलिए नहीं लागू होता कि 3 ग जो है उसकी धारा में 3 ग के अनुसार ये होता कि 100 वर्ष पूर्व अगर उसका धार्मिक स्टेटस जो है जो भी रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वह है तो लागू होता है। तो वहां ज्ञानवापी में धार्मिक स्टेटस हिंदू जो है धार्मिक जो है हिंदू पद्धति का है। All right, so that's the reactions that we are getting ahead of that order that we are expecting. Now let's cut across live to Shrishti. Now Shrishti, to begin with, give us an overall sense of what's happening around you. Security, of course, has been heightened since the morning, planning even as we are waiting this verdict. To begin with, take us through what's happening. बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको बताऊं कि लगातार सिक्योरिटी यहां पर बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर आप यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट यहां पर किया जा रहा है। हालांकि मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। अनाउंसमेंट्स यहां पर हो रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से जो पुलिस है वो यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। और रास्ते जो है वो यहां पर किसी भी प्रकार से जाम न लगने पाए ये कोशिश की जा रही है। इस तरफ से जाने का रास्ता है, लोगों को सीधे सीधे आगे किया जा रहा है और दूसरी तरफ से आपको बता दें राइट साइड से लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। मंदिर परिसर के बाहर किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासन की यही है कि इस पूरे एरिया में जो कि सीधे रास्ता मंदिर तक जाता है, 4 नंबर गेट आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज चूंकि फैसला आना है और फैसले के बाद में किसी प्रकार की विपरीत स्थिति यहां पर पैदा ना हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपको बताएं कि लगातार 2000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स किए गए हैं, चाहे वो कोर्ट की बात करें या मंदिर परिसर की बात करें। मंदिर का भी कोई एक रास्ता नहीं है बल्कि कई रास्ते हैं और सभी रास्तों पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। फैसला बहुत बड़ा है और इसी फैसले के बाद में इस केस का क्या रुख होने वाला है, क्या और रूपरेखा होने वाली है, ये आगे तय किया जाएगा। हालांकि what I wanted to ask you, Shrishti, what I wanted to ask you is that even as we await this order, once it does come out, it will not stop here. It will essentially be the beginning of how this process now goes forward in the court of law, because essentially what will be decided today is the maintainability of this plea, whether the courts can pick up this case and then decide on the future course of action. So for our viewers, explain to us what this means. बिल्कुल नुपुर, देखिए जैसा आपने कहा कि ये केस यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है। अभी आज का जो फैसला है वो ये तय करेगा कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं है, यानी कि मेंटेनेबल है या नहीं है। इसके बाद का स्टेप लीगली क्या होने वाला है, ये हमने विष्णु शंकर जैन से जानने की कोशिश की थी कि आगे क्या। तो उनका साफ कहना था कि हम फिर से एक याचिका दाखिल करेंगे जिसमें ASI सर्वे की मांग की जाएगी, कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी, तहखानों को दोबारा से खुलवाया जाए, उसकी जांच की जाए। जो रिपोर्ट आपको याद होगा की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिसमें सर्वे किया गया था लगातार ज्ञानवापी परिसर के भीतर, मस्जिद के भीतर वो सर्वे किया गया था, वो फाइल दोबारा से खोली जाएगी। ASI सर्वे की मांग होगी, कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी, यहां तक कि जो वहां मलबा है उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि यहां हिंदू पक्ष का यह मानना है कि अगर खुदाई होती है, तफ्तीश होती है, तो मूर्तियों के अवशेष यहां से बरामद हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जिससे यह साबित होगा कि यहां पर मंदिर था और इसीलिए मांग
की जा रही है कि गौरी श्रृंगार की पूजा यहां पर करने दी जाए। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मामला तब बदलता है जब सर्वे किया जाता है। सर्वे के अंदर जो फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, रिपोर्ट फाइल की जाती है, उसमें देखा जाता है कि जहां जो वो वजू किया जाता था वहां पर जब पानी को खाली करवाया जाता है तो शिवलिंग नुमा एक चीज दिखती है जो कि सीधे नंदी और शिवलिंग के बीच में एक दीवार है, उस दीवार को भी तोड़ने की मांग यहां पर की जाएगी। तो आगे का प्रोसेस ये होने वाला है। दूसरा पक्ष जो है उसको भी अधिकार है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी तैयारी है कि वो अगर फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में जाता है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो इस पूरे मामले में देखी गई हैं। तो ये दो पहलू हैं जो देखे जा सकते हैं। हिंदू पक्ष इस समय कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास में तथ्य हैं, सबूत हैं, इसीलिए फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। और मुस्लिम पक्ष के पास में सिर्फ एक दलील है, एक तो वक्त की दलील है और दूसरी 1991 वर्शिप एक्ट की दलील है। I wanted to come to you for that, Shrishti. Now, at the heart of the argument of the Muslim side is the fact that according to the Places of Worship Act 1991, status quo has to be maintained on all religious places, barring, of course, the Babri Masjid from 1947 onwards. And that is the claim that they are making, that because of that act being in place, there cannot be any changes made to any religious places. For our viewers, tell us more about what the Muslim side says. दर्शन करके आइए उसका। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष का 1991 को लेकर ही सीधे तौर पर उनका आधार है कि अगर वर्शिप एक्ट की बात की जाए तो यहाँ ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, सुनने लायक नहीं है और यहाँ पूजा अर्चना करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष की ये दलील है कि 1993 तक यानी कि 1993 तक व्यास जी के द्वारा अंदर पूजा अर्चना की जाती थी, जो हमारे पुराणों में, हमारी किताबों में, हमारी संस्कृति में ये सब दर्शाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद की दीवार पर, तहखाने पर अंदर त्रिशूल के निशान है, शंख के निशान है, बड़ा सा स्वास्तिक बना हुआ है। और किसी भी मस्जिद के भीतर त्रिशूल, स्वास्तिक, शंख, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? जो चीजें अभी तक छुपी रही हैं वो चीजें सामने आनी चाहिए। सालों सालों तक तहखाने के अंदर ये सब कुछ रहा, ये सब कुछ देखा गया, लेकिन इसे छिपाया गया। मुस्लिम पक्ष की महज एक ही दलील है 1991 को लेकर, लेकिन आपको बताएं ये हिंदू पक्ष का कहना है कि 1991 की जो दलील है वो हमारे फेवर में आने वाली है। नुपुर। All right, absolutely, Shrishti, as you're pointing out, even as we await this order today, there is a case that's also there in the Supreme Court, the hearing for which now takes place in October. Shrishti reporting from Varanasi. Thank you for joining us. All right, as we've been pointing out, of course, the administration in Varanasi, however, not wanting to take any chances. Security has been heightened across the city. It's been divided into various zones. All the entry and the exit gates from this area are being manned continuously. The order, of course, is something that we're expecting in about 2 hours, 15 minutes or so from now. That's when the hearing begins. Let's listen in to more reactions that we are getting at this point in time from both sides. देखिए 1991 का एक्ट तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 1991 में जो एक्ट आया था उसके बाद नवंबर 1993 तक भी व्यास जी उस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के तहखाने में पूजा कर रहे थे और वहाँ बैरिकेडिंग लगा के उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिस्पोजेस किया। तो अगर कोई आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि पहले हमारे व्यास जी को वापस तहखाने में वो पोजीशन दें। किस लॉ और किस अथॉरिटी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको कब्जे से बाहर निकाला? कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था। उस लॉ के वायलेशन में आपने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में आपने व्यास जी को तहखाने से बाहर निकाला है। तो इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है और ये सूट में एविडेंस के पटल पे देखा जाएगा कि किसकी क्या एविडेंस है। आज की स्टेज पे मुस्लिम समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ आगे ना उठाइए। अगर हमने ये कह दिया कि ये एरिया वज़ू खाना है तो इसको वज़ू खाना मान लिया जाए, इसको फाउंटेन मान लिया जाए, इसको फव्वारा मान लिया जाए, इसका कोई एग्जामिनेशन ना हो कि भाई ये शिवलिंग है कि नहीं है। तो ये किस तरह का एक लीगल अप्रोच जो उन्होंने लिया है, तो उस लीगल अप्रोच के खिलाफ मेरा विरोध है, जिसके खिलाफ हमने अपने आर्गुमेंट्स, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, रूलिंग से कोर्ट के सामने रखें। सर, लीगली अगर समझा जाए, फैसला मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि आज आपके पक्ष में आने वाला है, पक्ष में आता है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, आगे हमने एप्लीकेशन दे रखी है इसमें 80G की,
जिसमें जो इस वजू खाने के नीचे की दीवार है उसको हमने तोड़ने की मांग की है। कार्बन डेटिंग की मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल कोर्ट जाइए, तो वो एप्लीकेशन डाली जाएगी। फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कमीशन की रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको फाइनलाइज करके हम उसको कोर्ट की एविडेंस का पार्ट बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो फर्दर एविडेंसेस लीड की जानी हिस्टोरिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से, वो सारी बुक्स को एग्जिबिट किया जाएगा। All right, I'm going to go back across on the ground to Shrishti. I think she's speaking to some of the people who reside in that area. Let's listen in. गुजरात यस, मतलब आज तो डबल खुशी हो जाएगी, एक तरफ दर्शन हो गए, दूसरी तरफ फैसला। इसके या आज के दर्शन, सोमवार के दर्शन और प्यारे भोले बाबा का चुकादा, हम इतना खुश है कि बयान नहीं कर पाते। जो तथ्य मिले हैं, जो तमाम सबूत कोर्ट में रखे गए हैं, उससे आपको लगता है कि अभी और भी कुछ निकल कर आएगा अंदर से? शायद हो सकता है। इंडिया की संस्कृति है, बहुत बड़ी संस्कृति, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, मोदी साहब को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये एक विश्वास, सरकार पर विश्वास की बात करें या फिर लोगों की जो विश्वास है उनकी बात करें। आप देखिए मोदी साहब के लिए बारिश गिरती है, भगवान की प्रसादी है। अच्छा, इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं? इंद्रदेव प्रसन्न हो रहा है, क्या बात है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। तो ये लोगों का प्यार है। अब बारिश यहाँ पर हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि इंद्रदेव भी आज प्रसन्न है, चूंकि फैसला आना है। तो एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। देखिए पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है, दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी भी है और उत्साह भी है साथ ही साथ कि यहाँ आज जो फैसला आने वाला है वो ये कह रहे हैं कि बाबा हमारे हैं, बाबा के दर्शन वहां पर हुए हैं और फैसला पक्ष में आएगा। All right, so pilgrims over there already assembling, of course, today, but that key order comes out in some time from now. We're expecting the hearing to begin later this afternoon. And going across to another news story that we've been tracking since the morning after the Ahmedabad police had denied the Gujarat Aam Aadmi Party's claim of police raids. The Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia spoke to Republic TV exclusively. He said that AAP leaders in Gujarat are being threatened by the police. He's also added that the BJP is resorting to hooliganism ahead of elections. Do remember that the Aam Aadmi Party earlier this morning had claimed that their offices in Gujarat were raided by the police over there. Now this of course comes even as the Aam Aadmi Party convener and the Chief Minister of Delhi is currently in Gujarat on a 2-day visit. कि गुजरात में जैसे ही कल अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद में वहां पे पुलिस पहुंची हमारे पार्टी के एक दफ्तर पे और वहां 2 घंटे तक वो लोग रेड करते रहे, चप्पा चप्पा छानते रहे, कोने में क्या रखा है, किस कंप्यूटर में क्या है, किस फाइल में, किस कागज़ में क्या है, ये तलाशते रहे। 2 घंटे में उनको कुछ नहीं मिला। तो वहाँ उनको उम्मीद होगी पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे, क्या पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे ये लोग करते हैं वैसे ही सोच रहे होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला तो वो धमकी दे के गए कि यहाँ बीजेपी का राज है और यहाँ अभी देखेंगे तुमको कैसे काम करते हो, अभी तो और लोग आएंगे, अभी तो हम 3 आए हैं, बाद में और आएंगे, ये कह के गए बाकायदा। तो क्या कारण है कि पुलिस इतना साफ साफ सामने आके इनकार कर रही है कि हाँ हम वहाँ गए थे, पूछा लेकिन कुछ नहीं था? क्या कारण है ऐसे बेबाक स्टेटमेंट से इनकार? कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो अब तक दिखा रहे होते। ये तो सोच रहे होंगे ना, हो सकता है जैसे ये लोग काले पैसे से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे हो सकता है इनके दफ्तर में भी मिले, इसीलिए ये गए थे। सारा देश जानता है, पूरा गुजरात जानता है कि आज 27 साल की बीजेपी को केवल आम आदमी पार्टी चुनौती दे पा रही है। 27 साल की बीजेपी की सरकार को। अभी नंबर 2 पार्टी है गुजरात में आम आदमी पार्टी, सब मानते हैं और धीरे, हमारे सर्वे भी कह रहे हैं धीरे 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 अब नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं और आने वाले चुनाव से पहले पहले आप देखना नंबर 1 पार्टी बनेगी और ये लोग केवल रेड 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 करते रह जाएंगे और गुजरात की जनता इस बार स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, रोजगार के लिए, पेपर लीक बिना एग्जाम के लिए, इन सब के लिए वोट करेगी। सर मेरा आखिरी सवाल कि किस तरीके से आप भी कंटेंट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से डर रही है बीजेपी, तो बीजेपी उस चीज़ को काउंटर कर रही है कि नहीं हम वहाँ पे अभी भी बहुत इस भ्रम में रहें, अच्छा है। गुजरात में इस बार लोग, इनके पास जवाब नहीं बन रहा है। जब गुजरात के लोग पूछते हैं यार 27 साल हो गए स्कूल क्यों नहीं बनवाए,
लोग पूछते हैं 27 साल हो गए, हमेशा तुम्हारे पेपर ही लीक हो जाते हैं, कभी एग्जाम नहीं करवा पाते हो, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, महंगाई से लड़ने में कोई मदद नहीं मिल रही, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और कोई सरकार कुछ अच्छा दे रही है तो आप कह रहे हो फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। तो लोग इस बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को एक विश्वास के साथ देख रहे हैं, कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, वहाँ लोग भयमुक्त सरकार चाहते हैं, इनकी गुंडागिरी से दुखी हैं। बीजेपी गुंडागिरी कर रही है पिछले 27 साल से वहाँ पे, जैसे हमारे साथ करने की कोशिश कर रही है। जब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रेड डाल सकते हैं इस तरह से बिना रिकॉर्ड के, बिना अनऑफिशियल रेड्स, तो आम आदमी के साथ क्या हाल करते होंगे आप सोच सकते हैं। All right, so as we are pointing out, of course, the Aam Aadmi Party are continuing to maintain that they believe that they are being targeted by the Gujarat police because of the increasing popularity of the Aam Aadmi Party in Gujarat. Do remember that the Aam Aadmi Party has alleged that their offices were raided in Gujarat. And here's a look at what else is making news this morning. The Assam police have arrested 2 more suspects with possible links to the banned terrorist outfit, the Ansarullah Bangla, from the district of Morigaon. Morigaon district administration demolished a madrasa at the Moribari after police busted a terror module on the premises of the religious educational institution. The National Investigation Team has conducted searches at multiple locations in Delhi, Haryana and Punjab against suspected terror gangs linked to the killing of the Punjabi singer Sidhu Moosewala. NIA teams conducted these searches simultaneously in coordination with the local police forces in the case that's been registered recently by the Counter-Terror Agency to launch a probe against some terror gangs. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Summit of 2022 at the India Expo Centre and Mart in Greater Noida. The 2022 edition of the summit on the theme Dairy for Nutrition and Livelihoods saw the presence of over 1,500 delegates, including global and Indian dairy industry leaders, experts, farmers, companies, suppliers and policy planners. The Ahmedabad police is denied the Aam Aadmi Party's raid claims. The Ahmedabad police has said that the news that the Aam Aadmi Party's office has been raided by the police has come to light through the social media. No such raids have been carried out by the city police. Tejashwi Yadav has said that Nitish Kumar and he will meet Sonia Gandhi soon. When asked if the RJD chief Lalu Prasad Yadav and the Bihar Chief Minister Nitish Kumar will meet the Congress interim President Sonia Gandhi in the national capital, Tejashwi Yadav said that once Sonia Gandhi comes back, a meeting will be organised. After repeated requests from Sonali Phogat's family over her alleged murder case, Goa's Chief Minister Pramod Sawant has decided to hand over the case to the CBI. And we are cutting across to news that's coming in from Assam. The AIUDF has staged a walkout from the assembly in Assam. The AIUDF has demanded adjournment of the House to discuss the demolition of madrasas and the eviction carried out recently in Sonitpur district. As this was not allowed, the AIUDF actually staged a walkout to remember. The picture that has been shown in this tweet is this. यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से
संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, Rahul Gandhi, do you want violence in this country? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? Rahul Gandhi, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। यू हैव डिफरेंसेस विथ आवर आइडियोलॉजी, वेरी वेल, होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीक अगेंस्ट इट, but to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics. We immediately want the Congress party to take down this picture, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है,
जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ऑल दोज पीपल who have this anti-India mindset, anti-Hindu mindset, but astonishingly, राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मेमोरियल को इनॉग्रेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनॉग्रेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आऊंगा, तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट anywhere where there is anti-India rant and to be absent everywhere where there is nationalism. जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन very sternly that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Have it, viewers, a scathing attack by the BJP's Somit Patra on the Congress party with respect to this post that had been sent out by the Congress party, and he has also taken a dig at the Bharat Jodo Yatra that Rahul Gandhi is leading right now. But he has also spoken about how the Congress is targeting the BJP and the people who believe in the ideology of BJP, and stating that this is clearly inciting violence, and that Rahul Gandhi and the Congress party should immediately take this post down and also apologize for this post. And here are the top stories, viewers. All eyes on the Gyanvapi Mandir versus Masjid case as the Varanasi court is set to deliver the order today. मंदिर के तोड़ करके उसके ऊपर मात्र गुंबज बना के नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगा। Ahead of the crucial verdict, Hindu side maintains claim, says it's a mandir. It's a Republic mega exclusive key MBA project now under the lens for Dawood gang links. Massive corruption allegations on MBA project that got MBA nod now being probed. Mega NIA crackdown on terror, gangsters and links with terror under the lens. Storm over Congress's burning shots tweet. BJP says it's aag lagao for Congress and not Bharat Jodo.
Thank you for staying with Republic TV viewers. We are live and breaking and bringing you all the updates of one of the biggest stories that we are tracking today is that of the Gyanvapi verdict that is all expected to come out today in Varanasi, and now we are seeing ahead of that the heavy police deployment that has also been made in Varanasi just before. The verdict is all set to come out, and prohibitory orders were clamped and security tightened in Varanasi ahead of the district court order today on the maintainability of the plea in the Gyanvapi mosque Sringar Gauri case. Now, to maintain law and order, the entire city has been divided into sectors which have been allocated police force as per their requirement. Now, let me also bring in my colleague Vivek, who's been on the ground and getting us updates. We have the largest team of reporters on the ground, viewers. Let me bring in Vivek. Vivek, tell us more about the kind of deployment that has been made on the ground with respect to the security being kept in mind. And just hours before that very crucial verdict is all set to come out from the district court, and also tell our viewers about the legal arguments that have been presented before the court till now. देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि इस वक्त आज अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद वाराणसी की जो जिला कोर्ट है वो ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी केस में पोषणिता का जो मामला चल रहा था उस केस में अपनी सुनवाई 2 बजे करने वाली है। और कल हमने देखा कैसे वाराणसी पुलिस अलर्ट पर थी और आज पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। और ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपको लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की दिखा रहा हूँ, जिसमें लखनऊ कमिश्नर खुद एक फ्लैग मार्च को हेड कर रहे हैं। सामने आपको लखनऊ कमिश्नर दिख रहे होंगे, ज्वाइंट कमिश्नर दिख रहे होंगे, और इसके साथ साथ तकरीबन 10 थानों की जो फोर्स है वो उनके साथ यहाँ पर चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा अगर पीछे तक का अगर पूरा आपको विजुअल दिखाएं तो पुलिस के साथ साथ जो आरआरएफ के जो जवान हैं वो भी जो लखनऊ के संवेदनशील इलाके हैं उनसे उनका ये फ्लैग मार्च निकल रहा है। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये फ्लैग मार्च है जो फिलहाल चल रहा है। और लखनऊ के जो संवेदनशील इलाके चौक से लेकर के नखास होते हुए बाजार खाला तक जो रास्ता जाता है वहाँ तक ये फ्लैग मार्च निकलना है। और अभी फिलहाल हम इस वक्त बाजार खाला के करीब पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप सामने की तरफ में लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इस वक्त कोतवाली बाजार खाला में जो लखनऊ कमिश्नर है वो अंदर गए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो पूरी पुलिस की जो पूरी पीछे की जो फोर्स है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और ऐसे ही ये तो लखनऊ की तस्वीरें हो गई। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को आज आने वाले फैसले को लेकर के अलर्ट पर रखा गया है, जिससे फैसले के बाद किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना पैदा हो या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ रहे। और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक ये जो फ्लैग मार्च है वो चल रहा है। और अभी अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही जो वाराणसी जिला कोर्ट है वो पोषणिता के मामले में अपना फैसला जो है वो सुना सकती है। क्योंकि आपको बताऊं कि मई से ये जो केस है वाराणसी में वो चल रहा था और उसके बाद एक पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि ये सुनने लायक फैसला नहीं है, या यूँ कहें कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये फैसला नहीं सुना सकता। और इसी को लेकर के फिर उसके बाद केस के जो आगे की सुनवाई ही वो हुई। और ये देखिए ड्रोन से भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है, पूरे एरिया की ड्रोन से पूरे एरिया की निगरानी रखी जा रही है। और उसके बाद आपको बताऊं कि जो मई से जो केस की सुनवाई चल रही थी वो अब मई तकरीबन 4 महीने तक की सुनवाई चली है। अगस्त में 26 तारीख तक सुनवाई हुई है। और अब उसके बाद हम आपको सीधे जो कमिश्नर हैं उनकी बात सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं आज के अलर्ट को लेकर के। और क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे लखनऊ के जो चौक एरिया है वहाँ से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ था और फ्लैग मार्च शुरू होने के बाद नखास होते हुए बाजार खाला होते हुए ये फ्लैग मार्च आगे चल रहा था। और अब जो है पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ करने जा रहे हैं कि तो ये फ़िलहाल की वो तस्वीरें। और साथ साथ अभी वो पुलिस की भी पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये पुलिस की तस्वीर, तकरीबन 10 थानों की जो फोर्स है वो इस वक्त यहाँ पर फ्लैग मार्च में शामिल हुई है। और सामने की तस्वीरें जो पुलिस कमिश्नर है उनके साथ साथ जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं और वो अब यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करने जा रहे हैं। क्या कहना है उनका, हम सीधे आपको कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर इस पूरे प्रकरण में क्या कह रहे हैं। अगली आवाज़ लखनऊ पुलिस कमिश्नर की। माइक पकड़ रख दीजिए ना, आपको बैठ के बोलना पड़ेगा। अरे नहीं मैं बहुत जोर से बोलता हूँ यार, क्यों परेशान आ जाते हैं। मेरी आवाज़ वैसे ही पुलिस की आवाज़ बड़ी भारी होती है। हटो बेटा, इसकी जरूरत नहीं। मैं वैसे ही मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, लोग कहते धीरे बोलो यार। तो फ्लैग मार्च हो रहा है सर, क्या कहते हैं? नीचे रखिए, अभी आप लोग नीचे रख लो, आप नीचे नहीं रह पाएंगे, फिर ऊपर हो गया तो फिर बाइक कहाँ नीचे करो भाई। ये उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों पर ये इस फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि समाज के अच्छे लोगों में
सुरक्षा का एक भाव हम पैदा करें, समाज के अच्छे लोगों को ये लगे कि पुलिस भारी संख्या में सड़कों पे उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, और जो भी असामाजिक तत्व है उनको भी यह एहसास होना चाहिए कि अगर वो कुछ समाज की शांति को बिगाड़ने का कोई अगर इच्छा रखते हैं तो पुलिस इतनी संख्या में उपलब्ध है। इस उद्देश्य के साथ ये किया गया था। थैंक यू। कहाँ से कहाँ तक फ्लैग मार्च हो रहा है? पूरे लखनऊ नगर में अलग अलग स्थानों पर था। मैं एक जगह सहभागिता मैंने की है, बाकी जगहों पे जॉइंट सीपी, डीसीपीज और सभी थाने के लोग अपने अपने थाने क्षेत्र में जो फोर्स है उसके साथ फ्लैग मार्च करेंगे। ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी। थैंक यू। 2 बजे के बाद आएगा तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसा रहेगा? 2 बजे सेक्टर स्कीम लागू की गई है सुबह से, सेक्टर स्कीम लागू की गई है सुबह से, और ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। हम निरंतर स्थिति को वॉच करते रहेंगे और फ्लैग मार्च और अपना सभी लोगों से संवाद हमने बनाए रखा है, सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से, सभी के सहयोग से लखनऊ जनपद में पूरी तरह से शांति रखने का एक कोशिश करेंगे, और जो भी उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, लखनऊ कमिश्नर को आपने सुना जिन्होंने बताया कि जो तमाम संवेदनशील एरिया हैं और साथ ही साथ पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में जो लखनऊ कमिश्नर की पुलिस है वो फ्लैग मार्च लगातार निकाल रही है, और उनका कहना है कि 2 बजे से चूँकि फैसला आने वाला है, लेकिन फैसले के पहले ये पूरी तरीके से फ्लैग मार्च हुआ और उसके बाद भी पूरी यूपी पुलिस और लखनऊ कमिश्नर की जो पुलिस है वो अलर्ट पर रहेगी और सभी के साथ संवाद भी स्थापित किया है। सभी धर्मों के साथ सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनके साथ संवाद भी स्थापित किया गया है, और ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था सही रूप से बनी रहे, शांति व्यवस्था लोग बनाए रहें, चाहे फैसला जो भी आए। जी विवेक, ये भी बताइए कि किस तरह से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की हमने बात सुनी, पर जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स जो अब तक के किए गए हैं, जो पूरे केस में सुने गए हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील थी। हिंदू पक्ष ने यहाँ पर यह दावा किया था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में उनको प्रवेश दिया जाए, उनको वहाँ पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और साथ ही साथ वहाँ पर रेगुलर पूजा पाठ करने की अनुमति, क्योंकि अभी तक आपको बताऊँ कि श्रृंगार गौरी में सिर्फ साल में एक दिन ऐसा है जब वहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर में लोगों को जाने की अनुमति होती है, और इसी को लेकर के 4 महिलाओं की तरफ से ये दावा किया गया था कि वहाँ पर ये उनका अपना मंदिर है और वहाँ पर उनको अनुमति दी जाए। लेकिन इसके विरोध में जो मुस्लिम पक्ष था वो गया था और उन्होंने ये कहा था कि ये अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है वो उनकी ज़मीन है और वहाँ पर किसी भी तरीके का मंदिर होने की बात उन्होंने अस्वीकार की थी। हालांकि इसके बाद एक सर्वे भी हुआ था और सर्वे में कुछ ऐसे तथ्य भी निकल के सामने आए थे जिसमें मंदिर होने के प्रमाण ये कहा गया रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि मिले थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने उस बात को नकारा था, लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि पोषणिकता पर लेकर के सवाल उठा था और लोगों ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस प्रकरण की सुनवाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि 1947 की जो स्थिति किसी भी मंदिर या मस्जिद की रही है वही एग्जिस्ट करती है। हालांकि इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने इसमें यह कहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसमें सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन हिंदू पक्ष का ये मानना है कि ये उनकी अपनी पुरानी पूजा की जगह है और ये केस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता है। अब कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे जाएंगे। And there you have it, viewers. I've been getting you all the updates with respect to the Gyanvapi verdict that is all set to come out today. And before that, we see the kind of security deployment that has also been made across UP as well, in Lucknow, in Varanasi, and we just saw the flag march also that was being carried out by the authorities in Lucknow. Apart from that, the kind of deployment that we are seeing in Varanasi is also to make sure that there is no untoward incident that takes place post the verdict that comes out, whatever the verdict may be, since of course the tensions had run high even the last time. प्रकरण में आज बनारस कोर्ट फैसला देने वाली है, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है उत्तर प्रदेश में? वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा कितने बजे से सुनवाई है आज? सुनवाई तो 2 बजे का कहा गया है और जो भी फैसला आएगा हम लोग को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग जिस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं जी, अगर फैसला आप लोग के पक्ष में आता है तो फिर आगे क्या रहेगा, क्या स्टेप रहेगा? आगे स्टेप रहेगा, अब जैसे भी देखिए हम लोग कोर्ट के सहारे से चल रहे हैं, जैसा में कोर्ट का निर्णय देगा हम उसके
आगे चलेंगे। अगर फैसला मुस्लिम पक्ष जाता है हाँ, तो आगे हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे जाएंगे। Well, all right, viewers, we have been giving you several voices on this entire story as well from the petitioners who are being adamant in their claims and stating that there is just further legal recourse available to them even if the verdict today does not go in their favor. Viewers, on that note, we're slipping into a very short break, but we're getting you all the updates on this mega story on board the updates of this order that is all set to come out today in Varanasi. Amity has been ranked India's #1 private university for the 10th year by India Today, a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students. Ukrainian President Zelensky marked 200 days since the country's war against Russia began by paying tribute to nation's military, emergency services and those who are suffering because of this conflict. President Joe Biden marked 21st anniversary of the September 11 attacks, paying tribute to extraordinary Americans who gave their lives as one of the nation's darkest days. The Honorary Consul of Tuvalu said that he hopes King Charles III's passion for tackling climate change will benefit the South Pacific Islands. He said that an independent island nation which is within the British Commonwealth has suffered problems brought on by climate change and that the island needs more help. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Sringar Gauri case. The district judge A.K. Vishwesh had last month reserved the order till the 12th of September. धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोगों का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल। In a major anti-terror crackdown, NIA is carrying out Here's some news in brief, viewers. Assam police arrested 2 more suspects with possible links with the banned terrorist outfit Ansarullah Bangla team from the district of Morigao. Morigao district administrations demolished a madrasa at the Muraipari after police busted a terror module on the premises of the Religious Educational Institute. The NIA conducted searches at multiple locations in Delhi, Haryana and Punjab against the suspected terror gangs linked to the killing of Punjabi singer Sidhu Moosewala. NIA teams conducted these searches simultaneously in coordination with local police forces in the case registered recently by counter-terror agency to launch a probe against some terror gangs. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the International World Dairy Summit 2022 at the India Expo Center and Mart in Greater Noida today. The 22 edition of the summit on the theme of the dairy for nutrition and livelihood saw the presence of over 1,500 delegates, including a global and Indian dairy industry leaders, experts, farmers, companies, suppliers and policy planners. The Ahmedabad police have denied the Aam Aadmi Party raid claims, and the police has stated that the news that the Aam Aadmi Party office has been raided by the police has come to light through social media and that no such raids have been carried out by the city police.
Tejasvi Yadav has stated that Nitish Kumar and he will meet Sonia Gandhi soon. When he was asked if the RJD chief Lalu Prasad Yadav and Bihar Chief Minister Nitish Kumar will meet the Congress interim president Sonia Gandhi in the national capital, Tejasvi said that once Sonia Gandhi comes back, a meeting will be organized. And slipping into a very short break, viewers, getting you updates on the other side of a mega NIA crackdown on terror, gangsters and links with the terror under the lens. Stay tuned to Republic for more updates. मुश्किलों को करते नाकाम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the northeastern Kharkiv region, which had been occupied by Russia in recent days. Kiev's army has been carrying out large-scale counter-offensive to reclaim Russia's occupied areas. Flames lit up this night sky at a power station on the western outskirts of Kharkiv after it was hit in a strike. The thick smoke was seen billowing into this air. Ukrainian officials meanwhile said that Kharkiv's TEC-5, which is the country's second biggest heat and power plant, had been hit in a Russian strike. Ukrainian President Zelensky marked 200 days since the country's war against Russia began by paying tribute to nation's military, emergency services and those who are suffering because of this conflict. President Joe Biden marked 21st anniversary of the September 11 attacks, paying tribute to extraordinary Americans who gave their lives as one of the nation's darkest days. The Honorary Consul of Tuvalu said that he hopes King Charles III's passion for tackling climate change will benefit the South Pacific Islands. He said that an independent island nation which is within the British Commonwealth has suffered problems brought on by climate change and that the island needs more help. Prohibitory orders are in place and security has been heightened in Varanasi ahead of the district court's order on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Sringar Gauri case. The district Across to some more breaking updates that we're picking up, viewers. The MP Abhishek Banerjee's sister-in-law Menka Gambhir was on Saturday evening stopped by the Enforcement Directorate at the Kolkata airport from flying abroad and was handed over summons to join the investigation in a money laundering case as well. ED is set to quiz the Menka Gambhir today as well. Remember, this is the ongoing investigation that is being carried out by the ED. And we saw that even Menka Gambhir had been trying to leave from the Kolkata airport and had been detained, had been stopped from going to Bangkok, according to sources. And then she had also been sent a summons to appear before the investigating agencies on Monday, that is today. And of course, she will also be asked questions with respect to the coal scam case that is being investigated, for which Abhishek Banerjee has also been questioned by the agencies. Kishle, my colleague, is also joining me on the broadcast with more updates. Kishle, tell us more about the summons that has been given to Menka Gambhir and the kind of questioning that the investigating authorities also want to carry out with her. What is her relation to this entire ongoing investigation that is being conducted by the Enforcement Directorate?
Well, when Menaka Gambhir was previously summoned, and she actually yesterday night 12:30 a.m. she came in ED office because there was a technical mistake in the letter or the notice that was given to him by the ED, where 12:30 a.m. was mentioned as the timing. So she had to return as there were no ED officials in the office. And then today again we see that she has arrived at around 12:40 p.m. in the ED office as she was given notice that today she has to appear. Previously we saw that she was trying to leave the Kolkata airport and India for Bangkok, and she was stopped by the immigration officials as they had her name in the list of people whom cannot travel out of the country because of ongoing investigations. Now, as you were asking that what is her exact role and why she is summoned and what questions ED may ask her, well, in the coal scam and different other scams we have seen Abhishek Banerjee was previously questioned, especially in the coal scam, and now we see that Menaka Gambhir, his sister-in-law, is also in the same questioning. We will be coming back with more on this story only on Republic after a short break. Supreme Court will hear the anticipatory bail filed by suspended BJP leader Naveen Kumar Jindal regarding the FIR registered against him in different states over derogatory remarks. Disengagement of Indian and Chinese soldiers from Gogra Hot Springs area in eastern Ladakh, which is underway, is on course to being wrapped up by today. Supreme Court to hear petition seeking permission to amend BCCI constitution today. The case has been on board of bench led by Justice D.Y. Chandrachud, but was adjourned multiple times due to paucity of time. And here's a quick look at what else is making news this morning. Ahead of the Gujarat Assembly polls, the Aam Aadmi Party has claimed that the police conducted a raid at the AAP office in Ahmedabad on Sunday. Reacting to the development, Kejriwal said that Gujarat police found nothing at the party's office as the leaders and workers of the Aam Aadmi Party are honest. Now, there was no immediate response from the Gujarat police to the Aam Aadmi Party's claim. Supreme Court is scheduled to hear over 200 PILs challenging the constitutional validity of the CAA. A bench headed by Chief Justice is scheduled to hear the petitions challenging the validity of the act, which triggered widespread protests pan-India. Prime Minister Modi will inaugurate International Dairy Federation World Dairy Summit today. The summit has been organized in Noida at 10:30 a.m. with over 50 countries that will be taking part. मुश्किलों को करते ना काम, जनहित हमारा काम, देश का सम्मान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। लहू में उबाल, राष्ट्रवाद की मशाल, भारत का अमृतकाल, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन। A roundup of news and brief from across the globe. Ukrainian soldiers filmed themselves raising their country's flag in areas of the northeastern Kharkiv region, which had been occupied by Russia in recent days. Kiev's army has been carrying out large-scale counter-offensive to reclaim Russia's occupied areas. ज्ञानवापी मामले में ये मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर आज 2 बजे तक फैसला आना है। आज एक पहला पायदान है जिसे हिंदू पक्ष पार करेगा। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है ताकि माहौल किसी भी हालत में खराब ना हो, खास तौर पर मंदिर के पास में। It's time for the 3rd edition of the prestigious Ram Jethmalani Memorial Lecture. The biggest names on the most esteemed forum. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th, only on Republic TV. Thanks for tuning in this afternoon. Our big coverage today with regard to the Gyanvapi verdict, which is all set to be announced today. We'll get you a live coverage from Varanasi. First up, let's take a look at the top headlines. All eyes
eyes on Gyanvapi Mandir versus Masjid case as a Varanasi court is set to deliver order today. कि तोड़ करके उसके ऊपर मात्र गुंबज बना के नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगा. Ahead of the crucial verdict, Hindu side maintains claim, says it's a mandir. It's a Republic Mega exclusive key MBA project now under lens for Dawood gang links. Massive corruption allegation on MBA project that got MBA nod now being probed. Mega NIA crackdown on terror, gangsters and links with terror under scanner. This is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. Storm over Congress, burning shots tweet. BJP says it's aag lagao for Congress and not Bharat Jodo. And starting with our top focus this afternoon, the Gyanvapi verdict, which is all set to be announced today. Remember Section 144 that has also been imposed in Varanasi, and there's been heavy security also that has been deployed. We have our executive editor Rhythm also joining us. Rhythm, if you could take us through what can we expect in this verdict that is all set to be announced today. Well, let's tell our viewers today is the big day as the district court in Varanasi is going to be pronouncing the Gyanvapi verdict. It is something that's come to attention some months ago when the Gyanvapi petition was moved before them, and today District Judge A.K. Vishwesh, after reserving the judgment after hearing both the Muslim side and the Hindu side, had said he will be giving his decision. What is the decision today on? The decision today is going to be on the maintainability of the Hindu women's plea that is seeking permission to worship Hindu deities in the Gyanvapi mosque complex. I'm going to make it as simple as possible for our viewers because this is not about a technical issue, but whether the petition filed by the Hindu women to have the right to pray in the Gyanvapi mosque is even maintainable, because defendants moved the court, that is the Muslim side moved the court in an Order 7, Rule 7. I'm just going to very briefly give you the technical words. It's an application that is moved where they say that there should suit filed by the Hindu women asking for worshipping rights in the mosque. I've explained to our viewers what Order 7, Rule 11 is, which is basically rejection of the plaint. So we don't need to get too involved in the technical language here. But the bigger thing today, first viewers, let's tell you, survey tapes as we are showing had been circulated that showed that within the mosque complex there was a shifting. Muslim side said this is actually a fountain. Which side is correct is not going to decide today. The only thing that's going to be decided today is whether of the Hindu devotees asking for the right to pray is maintained. Which Varanasi ordered the video completed on the 16th of May and was presented. Well, we'll try and connect with Rhythm again, but remember the hearing is all set to take place today in the Varanasi court. Also important to note here as to who has said what all this time. Remember, this has been a long-raging debate when we talk about the claims that have been made by the Hindu side as well as the Muslim side. With the Hindu side now, with the Hindu side who's been claiming that yes, indeed, there is a shivling in this particular Gyanvapi mosque, and that there was a temple here, which is why their claims hold true. On that note, let's listen into what Mukhtar Abbas Naqvi had to say just a short while back. देखिए, हमें लगता है हमारे देश के लोग बहुत परिपक्व लोग हैं, और आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो न कहीं पर भी जीत का जश्न नहीं हुआ था, हार का हाहाकार नहीं हुआ था।
और समाज के सभी वर्गों ने इसको एकजुट होकर के और स्वीकार किया था। जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको सबको सम्मान के साथ और सद्भावना के साथ स्वीकार करना चाहिए। व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फिस्किंग चेकिंग तलाशी बीडीएस टीम के माध्यम से कचहरी परिसर के अंदर कोई अराजक गतिविधि न संचालित हो सके उसका भी प्रयास किया जा रहा है और संवाद और संपर्क के माध्यम से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के उनके संपर्क में। कुल कितनी फोर्स तैनात की गई है? लगभग 2000 से अधिक की संख्या में फोर्स हमारा इस समय लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात है। यह आने वाला आज जो फैसला आने वाला है यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है और आज का दिन हिंदू समाज के लिए मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं और यह देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशी वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहनलाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस समय हमारा नारा था ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम समाज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 19 एनिवर्सरी एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 19 एनिवर्सरी एक्ट इसीलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे Gyanvapi verdict. Dave is giving you the largest crew that's covering the story from all over. Let me go across first to our executive editor, political, Aishwarya Kapoor, joining us live on the story. Aishwarya, political ramifications of this, because we're hearing so many politicians wax eloquent on it. Some say that this was a shivling, some say this was a fountain. Politically, how the ramifications are going to be, Aishwarya? Well, absolutely, Rhythm. As you said, every politician, and specifically in the state of Uttar Pradesh today, ironically, even the Prime Minister was in Uttar Pradesh, though in the border district of Noida, alongside with the Chief Minister. The complete city of Kashi is under 144, and for that matter, the complete state of Uttar Pradesh has been put on red alert. So the complete police of the state, the ADG LO, is taking the stock of the situation every 5 minutes for the city of Kashi, not only keeping in mind that the kind of comments which have been made by several political parties, but also the certain specific political leaders who have been prior chief ministers of the state, the kind of comments which have come from them. So it's a very sensitive issue, but it's a legal issue. So as you said, you are a legal editor as well, Rhythm. So at this point of time, you understand that what is going to be the legal technicality of it today, but politically speaking, the fact remains that the SP, the BSP, the Congress, everyone is keeping a very close eye on that court. And it is not only the government. The government wants to keep the law and order at place. As I said, the complete city of Kashi is under 144. There are at least 18 cities in the state of Uttar Pradesh which are under red alert, keeping in mind that there was violence last time around. The petitioners and also the lawyers have been given tight security by the UP government. So every politician is keeping a very, very close eye on the developments at that court today. Back to you, Rhythm. Absolutely, Aishwarya. Politically, viewers, I just want to give you a sense of what's been happening. Republic was the first channel to be leading the coverage on the Gyanvapi case. We were the first channel to give you details about how the survey tape had revealed that there was a shivling there and not a fountain. Right now, and also tell our viewers, is what have the arguments in the case been? First, the Muslim side has argued that this petition is not maintainable as the Places of Worship Act prohibits the conversion of any place of worship and mandates the maintenance of religious character of any place. The Hindu side has said that there was a shivling found in the mosque compound, the Wazu Khana, a place inside the mosque. I'm going to ask one more question to Aishwarya as we have him. Aishwarya, we spoke about the political ramifications of this,
But the survey tapes have clearly revealed something that Samiksha and Aishwarya Republic TV showed for the very first time as the survey tapes were out. There was a shivling in the mosque area, within the mosque area. Well, absolutely, Rhythm, but we saw the kind of controversies, we saw the kind of reactions which came from both sides, not only on what happened inside the court, but even on the survey, even on those pictures. So it's a very sensitive issue, let's not deny that, and that's the fact, and that's why politics is being played over it. Despite the government, despite the comments being made inside the court as well, that you should not make sensational comments, but we still have leaders making comments in that regard. So it's a very sensitive issue, it's a religious issue, but today's judgment will really decide whether this will continue or not, whether it is viable or not. We've seen what has come out in the survey, and that's why you see that the petitioners every petitioner has been given adequate security, because that's how sensitive the issue is. Even on social media, the government is keeping an extra eye. We are being told that an additional team was asked from the Central Home Ministry for cyber crime to control false narratives, because we've seen fake news being peddled. So the government is being very wary of the situation. They want to keep a situation under control. They do not want these fake news peddlers to fake, they spread news and hatred at the end of the day, and hence they want things to be under control, especially the law and order situation, and that's why they have urged even. But you're confident about it? कितनी श्योर है कि मैम पूरा देश माता की जय। मैम पूरे देश की नजरें आज इस फैसले पर रहने वाली हैं और आप लोगों का विश्वास इस भजन के जरिए आप लोगों ने झलकाया। इस विश्वास के पीछे बड़ी वजह क्या है? हम लोग का भोले बाबा में पूरी आस्था है, पूरी आस्था। उन लोग के पास कोई, हम लोग बहस भी सुने, उन लोग के पास कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है कि उसके ऊपर उन लोग की जीत हो। हम लोग के पूरे पक्ष में साक्ष्य हम लोग के पूरा है। सुधीर जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हाँ या ना दो चीजें हैं, अगर ना रही तो आगे क्या स्थितियां रहेंगी, आगे क्या प्रक्रिया आप लोगों की तरफ से रहेगी, क्योंकि दोनों पहलू हमें देखने हैं। आप दोनों पहलू की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जो न्यायालय फैसला देती है तथ्य और रूलिंग और साक्ष्य के आधार पर देती है, तो मेरा तो ना रहना ही नहीं चाहिए। यदि ना हो जाता है तो मैं इसकी लड़ाई को, अगर बादनी मेरी साथ देती रहेंगी, मैं रहूंगा, तो आगे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और यह हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम कोर्टें बनी हुई हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे जितने तथ्य आधार रूलिंग दिए गए हैं उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, और उनका 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे अधिवक्ता सुधीर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज के इस मामले में अगर हाँ या ना या फिर होता है तो ऐसी स्थितियों में आगे यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन विश्वास पूरा है कि आज जो सवालिया निशान पोषणीयता पर है वो सवालिया निशान हटेगा और वादी पक्ष की जीत होगी। विजय अभिषेक के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत। परंतु हमने यूरोपियन नकल करते हुए शहर केंद्रित विकास सारा काम शुरू हुआ, इसलिए केवल ट्राइबल नहीं है, गांव भी। जो गाना सुनाई है एक बार फिर से वही गाना सुना दीजिए। मायन पुणना भैरो बाबा रान कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। Let me also now go across to petitioners joining us live from Varanasi. I also want to go across to my colleague Piyush Mishra, who's joining us live. Piyush, tell us what's happening around you. We saw the forces speak a short while ago when they told us that security has been beefed up in the area where you are. That everyone should maintain calmness. Well, absolutely. Security has been beefed up, and we are also showing you the pictures of Vishnu Shankar Jain and Hari Shankar Jain reaching to the Varanasi court. We will also talk to them and try to understand what are they expecting as far as today's big order is concerned. Because remember that there has been a marathon hearing taking place on this very issue for the last many days, and finally the court, Varanasi court, is going to pronounce the big verdict today. Remember that the case was filed in August 2021, and since then there was a demand. Vishnu Shankar Jain, what do you have to say? What are you expecting out of today's order?
What are you expecting out of today's order? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद यही है कि हमारे हक में फैसला होगा और जो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किए मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 11 वो डिसमिस की जाएगी। अगर नहीं होगा तो क्या उच्च न्यायालय का रुख करेंगे? बिल्कुल, तुरंत उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। बिल्कुल। तो साहब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, क्या आपको इसके बाद आगे क्या, अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम एविडेंसेस लीड करेंगे इस केस का। What Vision Shankar Jain is telling us that he is going to go for further evidences as far as this entire case is concerned. Remember, Rhythm, that there has been. Let me also try to get in a more. What will be your move? I'll tell you after the verdict. Thank you. What are you expecting, ma'am? If you can tell us, ma'am, any expectations from verdict? So multiple voices are now coming in from right outside the Varanasi court, and countdown hour has begun. What we are now learning is that between 2 to 2:30 the verdict would be out, and let me try to show you pictures of the gate number 4 of the Varanasi court. Subhash Nandan Chaturvedi is also here. He's also here. Let me try to get in a word from him. But before that, let me show you the pictures from right outside the main entrance, the main entry gate of this very court, where security has been beefed up. In a few minutes from now, we will see court to pronounce the verdict as far as this entire case is concerned. Remember that in August 2021, the petitioners had moved to the court demanding a daily prayer there at Ma Shingar Gauri complex. In April 2022, the court had at that time appointed special commissioners to go and do survey, following which we had seen on the very first day of survey massive ruckus taking place, massive controversy taking place, and after that the Muslim side had moved to court demanding removal of the then commissioner who was appointed by the court, and also they had demanded that the entire survey should be stopped. While listening to their arguments in April 2021 itself, the court did not remove Ajay Mishra, but instead appointed 2 more commissioners and then allowed to do a survey to the petitioners, and then we also saw as to how the survey was also conducted. I'm showing you the pictures from right outside the very court complex where the security has been beefed up. Remember that after having their 3 days of survey, we had also seen as to how the report was submitted on May 17 there in the court, and after that these Muslim petitioners had moved to Supreme Court, saying that this entire case comes under 1991 Worship Act. After the Supreme Court heard to all the arguments, what it did, it asked the senior judge there in District Court in Varanasi to listen into all the cases, to all the petitions, and then decide upon the maintainability clause on that. And after marathon hearing, finally today the court is going to pronounce the verdict. If this case is maintainable, if this case can be. Subhash Nandan Chaturvedi is with me. Let me try to get a word from him. And remember that he is the one who has been leading the Hindu side since beginning. Subhash ji, क्या आपको उम्मीद है आज बहुत बड़ा फैसला आने वाला है पूरे देश की निकाय में? बिल्कुल, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने वाला है और ये भारत के इतिहास को एक दिशा देगा कि न्यायालय की जो व्यवस्था है, न्यायिक जो तमाम काले कानून है जो बनाया गया है 100 करोड़ लोगों के अधिकारों को, धर्म का जो धार्मिक अधिकार है, आस्था का अधिकार है, उससे वंचित रखने का जो कानून बना है वो कानून वो इस विवादित परिसरों पर लागू नहीं होगा। ये जो हमको पूरा विश्वास है, ये आज के फैसला ये तय कर देगा कि काशी विश्वनाथ, आदि विश्वेश्वर या मथुरा या तमाम ऐसे धर्मस्थल जो आक्रांतों ने तोड़कर जो है मस्जिदें बनाई हैं, उस पर ये काला कानून 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होगा। और ये 7 रूल 11 की जो मांग इनकी थी कि ये पोषणी नहीं है दवा, ये खारिज कर दिया जाए। आज ये पोषणीयता पर मुहर लगाएगी न्यायालय। शुरू से इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष शुरू से कहता रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला 1991 वर्शिप एक्ट के अंदर आता है और ये सुनने लायक नहीं है। इसको लेकर आर्गुमेंट्स हुए। अगर आज आपकी जीत होती है उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों की जीत तो होना निश्चित है और जीत होगा ही, और हम लोग आगे फिर यही करेंगे कि आगे सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो दावा किया था कि माँ सिंगार गौरी का पूजन का अधिकार मिले, तो माँ सिंगार गौरी अभी तक के सर्वे में हम लोगों को मिली नहीं है। अब वो सर्वे जब हम आगे बढ़ाएंगे, उन तहखानों को खुलवाया जाएगा, जो तहखाने बंद है उस तहखानों को जब खुलवा के हम सर्वे करेंगे तब हम लोगों को माँ सिंगार गौरी मिलेंगी। और ऑलरेडी हम लोगों का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ न्यायालय में कि उस तहखाने को खुलवा के सर्वे कराया जाए। और
ये मांग ये भी है कि दीवार तोड़वाने की आप लोगों की मांग ये भी है कि आसपास जो दीवार है जो वजू जिसको कहा जाता है उसको लेकर क्या आगे आप लोग अप्रोच करेंगे? बिल्कुल, हमने तो कहा ना कि भाई हम लोग जो है उसको खुलवाने की मांग तो कर ही चुके हैं न्यायालय में, क्योंकि मामला 7/11 पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चल रहा है, इसलिए और बिंदुओं पर अभी सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। जब ये आज फैसला आ जाएगा कि ये मुकदमा ये दावा पोषणी है, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो हम लोगों की मांग है उस पर हम लोग जो माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो सर्वे को आगे बढ़ाएं और इस कार्रवाई ट्रायल को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमने देखा किस तरह से सर्वे को रोकने की भी कोशिश की गई, बीच में जब पहले दिन सर्वे हुआ उसको रोकने की कोशिश की गई, कमीशन हटाने की बात की गई, रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए। साथ साथ एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि जो पिक्चर्स अंदर से निकल के आई थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष गया। क्या देखिए, झूठ जो है, झूठ को दबाने के तमाम रास्ते होते हैं। झूठ जो है झूठा ही होता है, सत्य को दबाने के लिए झूठ अपने तमाम हथकंडे अपनाता है। उसी तरह जो प्रतिवादी हैं वो लगातार लगे हुए हैं किसी तरह ये मुकदमा आगे न बढ़े, पोषणी न हो, तमाम सर्वे न हो, कमीशन, ये लगे रहते हैं। ये उनका अपना भाई अधिकार है, वो करें, लेकिन सत्य है कि आदि विश्वेश्वर माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है और पूजन हम लोग को मिलेगा। ठीक है। What's coming in from Subhash Chandra Chaturvedi? Remember that he is a lawyer of Hindu side, and since beginning, Rhythm he is the one who has been leading the entire fight of not only conducting the survey inside the Gyanvapi complex, but also of the view of demanding that the petitioners should be allowed to offer prayer daily there at the Ma Shringar Gauri complex, which is right there inside the Gyanvapi complex. So that's the word which is now coming in from Subhash Chandra Chaturvedi, where he is now saying that he is very much confident that the verdict is going to come out in favor of Hindu side, and the moment it comes, they will move ahead demanding that all the tehkhanas, all the closed doors should be opened, and the entire survey in each and every corner of the Gyanvapi mosque should be complete, should be thoroughly surveyed. Each and every corner should be videographed and pictures are taken. Let me also once again try to show you the pictures from right outside the gate number 2 of Gyanvapi, of Varanasi court, and not only at the gate number 2 we are seeing this kind of security which has been beefed up, but also on the other side, on the gate number 4 also massive security has been done. We have also seen the pictures coming in of how flag march has been done. On my opposite side also massive deployment of police personnel has been done, and my video journalist Vivek is continuously showing you as to how there is a huge deployment of a police personnel which has taken place. Now let us tell to our viewers the timeline of this entire case. Remember that in August 2021, the petitioners had moved, 5 petitioners had moved to court demanding the daily prayers there at the Gyanvapi complex at Ma Shringar Gauri place. In fact, soon after they moved to court, the court, after listening to all the arguments in April 2022, had decided that survey should take place, and survey basically had started. After that, on the very first day, we had seen how there was a massive ruckus which took place. The Muslim side, they stopped the survey. In fact, they were of the view that the commission which was appointed by the court, Ajay Mishra, was taking the sides of Hindus, and that is why they wanted Ajay Mishra to be removed. The local court, the lower court here in Varanasi, after hearing to the arguments of Muslim side, decided to not only appoint 2 more commissioners, but also directed the administration to ensure proper security while survey is conducted. And then we saw how survey was conducted inside the Gyanvapi complex. After the survey was conducted, the report was submitted to court on May 17th, and meanwhile the Muslim side moved to Supreme Court, saying that this entire case of the Hindu side should not be heard as it comes under Worship Act 1991. Today, the Varanasi court is going to pronounce the verdict on the maintainability clause, because Supreme Court, after listening to all the arguments, earlier after listening to all the arguments, had directed the district court to listen all the views, all the petitions, and then finally after this marathon hearing, today the court is going to pronounce the verdict if this case, entire case, comes under... Piyush, stay with us. Yes, stay with us. So Piyush,
Mishra there reporting live from outside the court, getting us those scenes, security that has also been stepped up, massive security there. Again, let's stay with us, Piyush. Let's once again put this into context for our viewers as well. The Varanasi court is expected in fact to pronounce its orders anytime now on the maintainability of the plea in the Gyanvapi Mosque Sringar Gauri case. Now remember, 5 women had filed a petition seeking permission for daily worship of Hindu deities whose idols are claimed to be located on an outer wall of the Gyanvapi Mosque. Now the Anjuman Masjid Committee has said that the Gyanvapi Mosque is a Waqf board property and has even questioned the maintainability of this plea. District Judge, meanwhile, A. Vishwesh had last month reserved the order till 12th of September in communally sensitive matter. Madan Mohan Yadav, who is a lawyer of the Hindu side, had initially claimed, in fact, he has claimed that the mosque was constructed after demolishing the temple. The case is now being heard by the district court following an apex court order. Earlier, remember, a lower court had also ordered a videographic survey as well of this mosque. The survey work was completed on 16th of May and was reported. The report was in fact presented in the court on 19th of May. The Hindu side meanwhile had claimed in the lower court that the shivling was found during the videographic survey that was conducted of the Gyanvapi Mosque Sringar Gauri complex, but it was contested by the Muslim side. But in a few moments from now, it will be known whether the verdict in which that it will be known whether there is a shivling, whether there was a temple, and what really comes out of it. Piyush Mishra continues to be with us. Piyush, if you could talk to us more about the scenes you are seeing around you. We understand that the security has also been beefed up, section 144 that has also been imposed. Talk to us more about what you're seeing around you. All eyes now on the verdict, which is all set to be announced any moment from now. Well, Samiksha, in maximum in just 1 hour, we will see verdict to be pronounced by the district court here in Varanasi, and that was going to be the one on which the entire nation is keeping a close watch on. Also, I'm showing you the pictures from right outside the Varanasi court, district court, from where the verdict would be out. At around 2 to 2:30, we can expect the verdict to be out. Remember that marathon hearing has already taken place in this case from August 2021 till the last month. We have seen on 24th of August the hearing concluded, and on the very same day, on 24th of August, the court had reserved the order for September 12, and today is the day when the verdict would be out. And before that, the security has been beefed up not only in Varanasi but in many parts of Uttar Pradesh. I would ask Vivek to pan his camera and then show you as to how the police personnel have been deployed here in Varanasi in large numbers, not only at the gate number 2 but also at gate number 4. We are seeing the massive deployment of a police personnel. Vishnu Shankar Jain, Hari Shankar Jain, Subhash Nandan Chaturvedi, the top lawyers, all the petitioners, Sohan Lal Arya, all the big people, all the people who have been in this case since beginning, they all have reached here, and as we are speaking का काम ये सब जगह जरूरी है मदरसा का सर्वे होना। आपको लगता है कि राज्य बिहार में मदरसा का सर्वे? देखिए, अगर केवल वोट बैंक मानना हो किसी एक वर्ग को, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो हो रहा है मदरसा में। लेकिन सामाजिक और ज्ञान के दृष्टि से बिहार को भी मदरसे का सर्वे कराने की जरूरत। In on the Gyanvapi verdict, the verdict that is said to be announced by the Varanasi court today. Remember, the Hindu side has claimed that there was indeed a shivling. In fact, there is a shivling inside that Gyanvapi mosque, as there was a temple there in this Gyanvapi mosque that we are talking about here. Madan Mohan Yadav, who is a lawyer of the Hindu side, had claimed that the mosque was constructed after demolishing the temple. The case is being heard by the district court following an apex court order as well. And as Piyush was telling us, the order will be announced in an hour from now. And we'll go across to Piyush as well. We have Shivangi also joining us. Shivangi, it's going to be a big day. In fact, given the fact that it's been months now that this issue has been raging when we talk about that temple versus the Masjid Rao over the Gyanvapi mosque. सर, एक आखिरी सवाल है, मदरसों का सर्वे आज आपको मैं बताया हूँ, अभी होने दीजिए। मदरसों का सर्वे जो हाँ, मदरसों का सर्वे हो रहा है। देखिए, विपक्ष का कोई मतलब नहीं, हम सब लोग कानून का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
So, tracking all the latest coming in on the big story that we are tracking, the visuals there from inside the Gyanvapi mosque on your screens as well. Now, just to take our viewers through the claims that have been made, the VHP there who has claimed that there is indeed a shivling, Muslim side, whereas contending this claim of the VHP saying that there is no shivling indeed there. So, it's Muslim side versus the Hindu side. The Hindu side having claimed that there was indeed an idol that was found. That's the claim that has been made by the Hindu side, saying that there is an important piece of evidence inside the Gyanvapi mosque and that there is indeed a shivling. And going on to add, the Hindu side, Vishnu Shankar Jain, the Hindu side lawyer, saying that the temple was, is and will be there forever. On that note, let's once again listen into the petitioner's bite that came just a short while back. यह आने वाला आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है और आज का दिन हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं और यह देवाधिदेव महादेव प्रभयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशी वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहनलाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस समय हमारा नारा था ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम समाज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 19 एनिवर्सरी एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 19 एनिवर्सरी एक्ट इसलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे तहखाने पर जो है दर्शन पूजन का अधिकार हो रहा था और वक्फ बोर्ड भी लागू नहीं होता यहाँ पर इसलिए कि 1936 मुकदमा नंबर जो है 62 1933 में भी खारिज हो गया था, जिसको लेकर के वह 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी खारिज हो गया और अंततः वक्फ बोर्ड यहाँ पर साबित नहीं होता, इसलिए वह खारिज होने वाला है। हिंदू समाज की विजय होने वाली है। वह 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय जिला जज फैसला सुनाने वाले हैं जो हम लोग के लिए आह्लादकारी होगा। धार्मिक आधार पर ये पूरा जो याचिका है वो रखी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा कि गौरी श्रृंगार पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार, यहाँ पूजा अर्चना 1991 के पहले से होती रही है और ये हमारा अधिकार है जो हमें आप दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर जब सर्वे होता है, कमीशन बनता है, सबसे पहले मुझे याद है आप ही बाहर आए थे और आपने कहा था कि महादेव के दर्शन हो गए। वो शिवलिंग दिखने के बाद में वो आकार जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी रही, उसके बाद आप लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। हाँ, जैसे ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ और सर्वे के दौरान वहां पर जो करीब 35 फीट लंबा त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की कलाकृतियां, कमल के पुष्प कृतियां, शंख चक्र गदा पीपल के पत्ते और तो सारे साक्ष्य वहां प्रमाण थे। हम लोग का उत्साह और हिंदू समाज का उत्साह बुलंद हुआ और तो और जब तक अब तक जो है नहीं जानते थे और उसके बाद जैसे ही हमने बाहर निकले हम कहे बाबा मिल गए और आज पुनः कह रहे पहली बार कि यह आने वाला विजय, यह बाबा विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का आज दिन होगा। शिलान्यास बीजारोपण का आज दिन होगा। जाहिर बड़ी बात आपने कही है और आगे चूंकि लंबी लड़ाई है, अगर फैसला मान लीजिए आज आपके पक्ष में आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि दलीलें हमारे पास मजबूत हैं, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष दलीलें रख रहा है वो आपके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि उनका ये कहना है कि लागू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत हमने पेश किए हैं कि 93 तक व्यास जी वहां पर पूजा अर्चना करते थे। यूनिवर्सिटी एक्ट वहां इसलिए नहीं लागू होता कि 3 ग जो है उसकी धारा में 3 ग के अनुसार ये होता कि 100 हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आज फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। आज हम लोग इतिहास रचेंगे। मैम, कितनी उम्मीद है आज के दिन को लेकर? बहुत सारे काशीवासी, सारे सनातन धर्म लोग बहुत खुश हैं। फैसला हम लोग के हक में आएगा। मैम, अभी शिव जी का एक भजन आप सुना रही थी, हमारे दर्शकों को सुना दीजिए प्लीज। ज्ञानवापी में हवन औघड़दानी हाय हाय औघड़दान
बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन देना गढ़वानी, हाय हाय मैं गढ़दानी, बाबा दुआरे पुकारे, बाबा दुआरे सबका पुकारे, हमको दर्शन दे दाया घरदान, हाय हाय ज्ञानवापी के मंदिर में हूँ, ज्ञानवापी के मंदिर में हूँ घरदानी, घरदानी, हाय हाय घरदानी, हर हर महादेव। मैम पूरा देश माता की जय। As we hear the petitioner speaking to Republic TV, we also tell you today's verdict is on the maintainability of the Hindu side's plea. Security has been briefed up in the area. Viewers, we were the first channel to show you what the survey tapes had shown, which is that there's a shivling within the mosque area. Now, I also want to go across to our executive editor, political Aishwarya, who's joining us. Aishwarya, today is going to be seen as a big verdict only because we're going to see in the next few hearings whether the Hindu devotees' plea and right to prayer will be upheld by the court. Well, it's a very sensitive issue, Rhythm. As you said, the very order today is on the maintainability of the Hindu side's plea. So, but at the end of the day, it's a sensitive